Hello, good evening, students. Tell me audibility and visibility, please. Yeah, good evening. Am I audible and visible? Everything clear? All clear, very good. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन ऑन एल्गोरिथम्स PYQ सीरीज. वेलकम बैक टू PW प्लेटफॉर्म. So without wasting much time, let us quickly go into it. जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इन दिस कोर्स I have listed down here. We will begin our discussion with asymptotic notations, where the intention is to look into questions pertaining to analysis of algorithm. जो analysis के basis पर time और space complexity analysis के basis पर जो गेट के क्वेश्चन थे वो हम देखेंगे. Yeah, very good evening again to all of you. Babu, Gaurav, thank you very much for your wishes. Yes, so asymptotic notation that deals with analysis part. फिर उसके बाद हम देखेंगे questions related to design strategies. जैसे आपको पता है we have strategies like divide and conquer, greedy method and dynamic programming. तो ये तीन strategies के basis पर जो previous year questions थे, जो typical questions हैं हम देखेंगे. और एक लास्ट में मैंने लिखा है टॉपिक miscellaneous topics, जहाँ पर बेसिकली क्वेश्चंस रहेंगे ऑन टॉपिक्स जो ओवरलैपिंग टॉपिक्स है, जैसा कि है ओवरलैपिंग विद डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक हीप्स है, मे बी सम क्वेश्चंस ऑन बाइनरी सर्च ट्रीज, एंड देन more predominantly, more importantly, we have topic questions on what we say graph techniques, graph traversals, then applications of graph traversals and so on. So this is the agenda that we are going to have for today's session. Okay? So let's begin our discussion now with the first question from the asymptotic notation part. Start with warm-up questions. So slowly some warm-up questions and then we'll focus on some intricate questions as well. Yeah. Come on, boys and girls. Please tell me the answer for this question. बहुत simple problem है that deals with the behavior of algorithm, or you can say types of analysis, जिसे हम बोलते हैं worst case, average case, best case. वो basis पर ये question था in 2012 for 1 mark. Please tell me what is the correct answer for this. जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे what is the answer for this. And then we will also look into some variations based on this question. ये question के basis पे कुछ variations भी बनते हैं, वो भी हम देखेंगे. Come on, tell me what is the answer for this. It should not take so much time. Yeah, Sritam Swain is saying C, A, Chanchal is saying C. Okay? Tapan Ghosh, you are saying A, whereas other people are saying C. Be careful, boys and girls. Yes, many people are saying correct. I think the answer is C. इसका जो basis है वो हम यहाँ पर discuss कर लेते हैं ताकि आपको और कुछ अगर ये क्वेश्चन के बेसिस पर कुछ अगर वेरिएशंस इन केस फ्यूचर में आ सकते हैं तो क्या हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे. ठीक है? दोज हु सेड ए और दोज हु सेड अदर देन सी, प्लीज हैव अ लुक ऑन बोर्ड. तो लेट मी पुट डाउन द इक्वेशन हियर. तो हम ये कह रहे हैं, लेट अस से द फंक्शन b ऑफ n डिनोट द बेस्ट केस टाइम, a ऑफ n डिनोट द एवरेज केस टाइम. ठीक है? And W of n indicate the worst case time. Then you know it from the relation, the absolute relation that you have is the best time is always less than or equal to average time, is always less than or equal to worst. This is a global relation that you have to always remember, please. I don't have to really tell you, but just to complete the formality मैं आपको ये बता रहा हूँ. This is a relation that you have to remember always. Right? This is a relation which you have to remember always. Best is less than or equal to average, average is less than or equal to W of n. और ये basis पर हम आप notation बना सकते हो. F of n is less than or equal to C times G of n. तब हम बोलेंगे F of n is order of G of n. F of n is equal to order of G of n. Right? तो अब देखिए आप यहाँ पर A of n is less than or equal to W of n, B of n is less than or equal to A of n.
मतलब ये हो गया B ऑफ n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A ऑफ n. ये तो चॉइस दी नहीं गई है वहां पर, हम अभी देखेंगे फिर से. A of n is definitely big O of W of n. This relation definitely implies, we can imply from this. Is it not? So based on this, आप देखिए पिछले इक्वेशन में omega is impossible, right? This is not always true. A of n is theta of W of n. This is also impossible. A of n is equal to W of n, order of W of n. This is definitely possible. This is sometime possible, right? A of n is equal to omega of W of n. A of n should be greater than or equal to. Equal to. Sometimes it is possible. Sometimes. But here he is saying, be careful. In the question is saying always. ये बात को emphasize करना है. Always की वजह से ये wrong होगा. A of n is equal to theta of W of n होगा जब A of n और W of n की value same होगी. So this is also not always. This is also not always. This is always. Right? And this is sometimes, not always again. So that's why always option happens to be like this. So you have to argue like this and arbitrate. This is sometimes true. This is also sometimes true. This is also sometimes true. But not always. This is always true. I hope based on the definition of big O, omega, theta, you are able to arbitrate the correct answer for this problem. Okay? Yes. Sometimes agar hota to then we can definitely would have said that. Right? So that is the meaning of this question. Next up, ye dekhiye, based on this, if you call this as equation 1, I asked some variations on this. Please follow carefully. Suppose based on this equation, I can draw a conclusion that sometimes maybe B of n is equal to A of n is equal to W of n. Sometimes it's possible. Can you tell me at least one problem, boys and girls, can you tell me at least one problem which obey this inequality, which obey this equation, that the algorithm or problem time complexity of best is equal to average is equal to worst? Can you tell me at least one problem which satisfy this condition? Very good. Move issue. You are right. This is merge sort. Very correct. Of course, there can be other problems also. Heap sort bhi bol sakte ho aap. Merge sort is correct. Heap sort is also correct. Sometime it may happen based on equation 1. Sometime it may happen that maybe for some problems best is equal to average. And both of them may be less than W of n. This is also possible. Can you suggest a problem? Do you know any problem which obey this inequality? Its best and average are same and both of them are less than worst. Chanchal is absolutely correct and Tapan is also correct. This is quick sort. Such type of questions, variations can be asked in future. Quick sort. And maybe, yes, maybe for some problems it may happen that best will be less than, average and worst may be same. Average and worst may be same. Can you tell one problem which obey this inequality, which satisfy this condition? Tell me. Best is less than, average and worst are same. Tell me one problem. Suggest one problem. Not heap sort. No. Selection sort. No, selection sort is again order of n square always. Insertion sort is order of n. Correct. Order of n. And then average is order of n square, worst is also order of n square. This is one correct answer. Insertion sort. There is one more problem. Let me see. Modified bubble sort, ठीक है, लेंगे हम वो भी option लेंगे, modified bubble sort, लेकिन natural में, not traveling salesperson. I would say linear search, even to certain extent binary search. But linear search always satisfies. Is it not? Just check it. Best होगा linear search का order of 1. Right? Average होगा order of n, worst होगा order of n. So in linear search also obey this inequality. Correct. Fourth, based on this equation, last possibility जो हो सकती है, B of n is less than A of n is less than W of n. This is also possible from equation 1. Can anybody tell me, let me see, who is knowledgeable here with regard to the last equation? Can anybody tell me, what is the problem perhaps which satisfies this inequality? Best is less than average, average is less than worst.
Do you know any problem whose best complexity is less than, not equal to, less than average, and average is less than worst? They are not equal to. Any problem that obey this inequality? Any problem that obey this inequality? Anybody? It's a very interesting case. ये तो सभी को बात पता है, यहां तक सभी को मालूम है. Everybody can understand these equations. But does anybody know about the last one? Do you know any problem? क्या आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम है जिसका बिहेवियर इस तरीके से हो कि इसकी बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी इज लेस देन एवरेज, एवरेज इज लेस देन वर्स्ट? मैं आपको एंड ऑफ क्लास तक टाइम दे रहा हूं. बीच में अभी आपको कभी भी आपके पास अगर कुछ आंसर आए तो इसका मुझे आंसर बता दीजिए, या लेटर ऑन आप मुझे पिंग भी कीजिए ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लेट मी नो what is a problem that exhibit this inequality. It's a very interesting case. Best is less than average, right? And average is less than worst, right? So if this, in this case, for example, when average is less than worst, जब हम बोलेंगे this would satisfy the inequality or satisfy the condition that A of n is omega of, small o of W of n. B of n is small o of A of n. Like that we can say. Heap sort is not like that. Prashant Prabhakar, heap sort time complexity कितनी है? हमेशा in log n. Always. So therefore heap sort comes under the first category. Please observe that. Heap sort comes under the first category. ठीक है? So bear with me till the end of the class. You can think on this problem. आप search भी कीजिए from the known problems to you and tell me which problem obey this inequality. That's very interesting. चलिए आगे बढ़ेंगे. Next question पर देखेंगे. Very simple. Based on increasing order of asymptotic rate of growth. Increasing order में इसके जल्दी बता दीजिए मुझे आंसर प्लीज. सिंपल प्रॉब्लम है, जस्ट एज मैटर ऑफ वार्म अप. जैसे मैंने कहा ये सेकंड क्वेश्चन है हमारा. ये 2021 रीसेंट सीरीज है. फिबोनाची सीरीज वैसा नहीं है. देखिए आप, विदिशा मिश्रा, यू हैव टू टेल फिबोनाची सीरीज व्हाट इज द बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज द वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज द बेस्ट एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी. फिबोनाची, नो, इट इज नॉट. अगर आप डायनामिक प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन से बोलेंगे फिबोनाची का कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन. क्या देयर वर मेनी क्वेश्चंस आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस पैराडाइम. ये पैराडाइम के ये मॉडल के क्वेश्चन पर कई क्वेश्चन आ चुके हैं, जिसके लिए मैंने क्रैश कोर्स में भी आपसे बताया था कि बॉयज एंड गर्ल्स आप बिल्कुल फंक्शंस के बारे में अच्छा थरोली प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं. सो यू शुड बी नॉलेजेबल. आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा फंक्शन इज हैविंग असिम्प्टोटिकली ग्रेटर रेट ऑफ ग्रोथ एंड कौन सा फंक्शन हैज स्मॉलर और लेसर रेट ऑफ ग्रोथ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वन वे ऑफ सॉल्विंग, ऑफ कोर्स देयर आर कपल ऑफ वेज ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस. वन वे ऑफ सॉल्विंग आई वुड ऑलवेज से इज यू कैन अप्लाई लॉग. लॉग का कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करके डिटरमिन कर सकते हो कि कौन सा फंक्शन स्मॉल है, कौन सा फंक्शन लार्ज है. तो यहां पर हम लॉग ले लेंगे फंक्शंस का, जस्ट फॉर कंप्लीटिंग फॉर्मेलिटी. आई हैव 10 पावर n एंड n पावर log n, और लास्ट फंक्शन है n पावर रूट n. अगर आप ये फंक्शन का लॉग ले लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी n इंटू लॉग ऑफ 10 टू बेस 2 फॉर एग्जाम्पल, और ये फंक्शन बन जाएगा log n इंटू log n, सो log n होल स्क्वायर, और ये फंक्शन बन जाएगा रूट n इंटू log n, रूट n इंटू log n. तो ये देखिए आप दोनों, ये फंक्शन है n इंटू कॉन्स्टेंट और ये है log n इंटू log n और ये है रूट n इंटू log n. तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा ये दो फंक्शन में log n की वैल्यू ज्यादा है या रूट n की वैल्यू ज्यादा है. हमने क्रैश कोर्स में भी देखा था कि आपको पता भी होगा log n इज लेस देन रूट n. असिम्प्टोटिकली द वैल्यू ऑफ log, ऑलवेज रिमेंबर, इज लेस देन रूट n. तो मतलब ये है कि दिस फंक्शन इज लेस देन दिस. सो our function, this we are calling this as f1, you are calling this as f2, you are calling this as f3. So therefore it implies that f2 is less than f3. f2 is less than f3 and both of them are less than f1, क्योंकि f1 में आपकी लीनियर ग्रोथ है, n है, ये लॉगरिथमिक ग्रोथ है. So therefore less than f1. So f2, f3, f1 is the correct lesser rate of growth. So therefore the correct answer for this, as many people have said, except for few people. I think some people have gone wrong. Right? Some people have gone wrong. So be careful why you have gone wrong. So therefore 231 is correct, not 213. ये गलत आंसर है. B is wrong. D is correct. ठीक है? So this is one. Sham, it is not shell sort. No. You can again verify. I said I'm going to give you time. You can verify. Shell sort is not correct answer for that. चलिए ये आंसर ले लीजिए एक बार, इसका भी ले लीजिए. वार्म अप एक्सरसाइज.
based on asymptotic complexities? What is the answer for this question? या चंद्र प्रकाश, गुड इवनिंग. चलिए जल्दी आंसर कीजिए चंद्र प्रकाश. रैडिक सॉर्ट, शिफू खादिर, नो यू डोंट ट्राई टू मेक गेसेस हियर. जितने भी सॉर्टिंग टेक्निक है आप चेक कर लीजिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस की. कम ऑन, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? सिग्मा आई क्यूब. Yes. Come on, you should be warming up with these problems. These are very simple and interesting questions. Abhinav Karnatak, you are writing for GATE 2024. ठीक है, आप अटेंड कीजिए, सेशन अटेंड कीजिए, थोड़े प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो करिए. तो प्लीज टेल व्हाट इज आंसर फॉर दिस. देखिए आप सिग्मा आई क्यूब की वैल्यू है n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, इट इज सम ऑफ n टर्म्स, राइट, होल स्क्वायर. दिस इज सिग्मा आई क्यूब. This is going from 0, so it doesn't matter. You can even take from 1 to n or 0 to n. If it is 1, if it is going from 0, you have to add 1 to it. We don't care for asymptotics. So therefore, the order of this, if you take the highest order of magnitude term is n to the power of 4, right? N to the power of 4. So I would say this is definitely n to the order of n to the power 4 is also omega of n to the power 4. So therefore, we say it is theta of n to the power 4. Theta of n to the power 4. ये होगा. तो देखिए अब आप, दिस इज थीटा ऑफ n टू द पावर 4, दिस इज ट्रू. थीटा ऑफ n पावर 5 ये नहीं हो सकता क्योंकि n पावर 5 इज ग्रेटर. ऑर्डर ऑफ n पावर 5 मैथमेटिकली करेक्ट है, लॉजिकली करेक्ट है. उसी तरह ओमेगा ऑफ n क्यूब क्योंकि n पावर 4 इज ग्रेटर देन n क्यूब, so therefore this is also true. So correct options are 1, 3 and 4. 1 or 3 or 4 but not 2, so therefore C is correct. Hope you got the answer. ठीक है. This is a way of solving such questions. ये questions के basis पर मैं आपको ये बात कहना है कि ये questions के basis पर आपको ये कहना है कि please try to basically summarize or try to basically revise the concept of summation series. पहले दो questions के basis पर हमने कहा था कि asymptotic notations के definition की extreme clarity होना चाहिए. Next question के basis पर हम ये कह रहे हैं कि आपके summation series क्लियर होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो. सभी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, समेशन कैन इन स्पेशल केसेस कैन बी फाउंड विथ इंटीग्रेशन प्रोसेस. तो इंटीग्रेशन के भी कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप कर लीजिए बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन, राइट, सो दैट यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस. चलिए आगे बढ़ेंगे. इसका भी बता दीजिए एक बार. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम रिसेंट पेपर, 2017 का पेपर है. Rate of growth, increasing order, again to test your function knowledge of your functions. Direct question है, warm up questions before we come to more intricate problem. Think carefully. People are fluctuating between B and C. Why so fluctuation? अभी तो fluctuation नहीं होना चाहिए. What is the correct answer? Chanchal, what is the answer? Shifu Khadir, Satyam B Nayak, B. Very good. Once again, I am re-emphasizing, boys and girls, please take this seriously, because in such practice sessions, you will definitely get a competitive spirit, plus you will also get a chance to overcome your silly mistakes. इसलिए मैं कह रहा हूं कि seriously solve कीजिए problems. चलिए, 10 is constant, then I have root n, log n, and then I have n, then I have 100 by n. तो मतलब सबसे निचली rate of growth, सबसे slower rate of growth कौन सा है function? 100 by n, because 1 by n is a decreasing function. जैसे जैसे आप वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज करोगे ना, ये फंक्शन डिक्रीज होगा, हमेशा डिक्रीज ऐसा जाएगा. वेराज जो वैल्यू कांस्टेंट है, इट विल बी ए कांस्टेंट वैल्यू 10. मतलब यह है कि 10 डेफिनेटली इसका रेट ऑफ ग्रोथ इज ग्रेटर देन 1 by n. So 1 by n, that is 100 by n, this should have the lesser rate of growth. So therefore 100 by n. So I will have the increasing order like this, less than 10. लेस देन, अब ये तो बहुत सिंपल है, n और log n में नेचुरली log n इज लेस देन n, तो log n आ जाएगा.
फिर उसके बाद रूट एन भी है, राइट? हमने अभी कहा रूट एन इज ग्रेटर देन लॉग एन लेस देन एन, तो वेरी करेक्ट आंसर इज बी, वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए आगे आगे जाएंगे। ये भी एक बता दीजिए प्लीज, दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सम मॉडल्स ऑफ प्रॉब्लम्स वेर बेस्ड ऑन दिस, हमने क्रैश कोर्स में भी देखा था। You will be given a couple of questions here, and then you will be asked which function is in the order of the other. Come on, come on, come on, fast. Yes, D. What about other people? Only one person has given the answer. Yes, many people are saying D. D is correct. Can you tell me what is the property that are we going to use here for solving this problem? Which property? Is based on a property of asymptotic notation. Which property? Can anybody write down in the chat box and tell me based on which property are you going to tell this answer? D. Which property of asymptotic notation? Come on, write down the property name. No. Chandra Prakash, you are saying C. C is not correct. Yes. P, you are right. Sine value lies between 1 and minus 1 and 1. The value of sine and cos for a value of n, this parameter in degrees or radians will fluctuate between minus 1 to plus 1. ये तो ठीक है. मैं पूछ रहा हूं प्रॉपर्टी का नाम क्या है जिसके बेसिस पर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे. What is the name of that property? Name of the property is called trichotomy property. शायद आपने पढ़ा होगा trichotomy property. Do you remember? What does trichotomy property say? Given two real numbers a and b, trichotomy property say that the value of a should either be less than b, the value of a should be either greater than b, if not the value of a should be equal to b. This is called trichotomy property. But unfortunately or fortunately, trichotomy property is not satisfied by asymptotic notation. ये बात आप हमेशा याद रखिए. Trichotomy property is not satisfied. Asymptotic notation do not obey trichotomy property. मतलब ये है कि given two functions f and g, it is not necessary always that f should be either less than g, for which you say either big O or small o. F should be greater than g, for which you say it is big omega or small omega, or you say that f is equal to g, for which you say it is theta. This is not true. ये जरूरी नहीं है. उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये प्रॉब्लम. देखिए अब हम बोलेंगे साइन मिनिमम वैल्यू अगर आप लेंगे तो दिस फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी, मिनिमम वैल्यू है -1, सो 1 - 1 दिस विल बिकम n power 0 1, फॉर विच यू से n इज ग्रेटर देन दिस. तो sometime f of n is becoming greater than g of n. उसी तरह अगर आप मैक्सिमम वैल्यू ले लें साइन की +1, तो ये फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी n स्क्वायर. तो नाउ g is becoming greater than f of n. तो मतलब यहां पर यह है कि एक फंक्शन समटाइम्स f is becoming greater than g and sometimes f is becoming lesser than g. So f and g are not getting converged. They are not getting converged. They are always fluctuating, right? They never converge. Whatever be the highest value of n you take, they never converge, and hence I say that f and g are neither order or omega of each other. Naturally, that if they are not in the order omega of each other, they cannot be theta of each other also, right? So therefore, the correct answer for this problem is D. Neither 1 nor 2. That means f is neither order of g, f is neither omega of g. So this question is also important, and the background behind that I have discussed here. चलिए ये क्वेश्चन ले लीजिए. Workout is also a slightly interesting problem. Let me see how many of you will give me the correct answer. You have to work out a bit here.
ओरली आप नहीं करोगे, थोड़ा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा यहां पर। कमान कमान कमान। पैकेजेस का मतलब यहां पर एल्गोरिथम्स है। तो लेट्स इमेजिन हियर, लेट्स टेक ए केस हियर। Imagine there is some database. There is some database. There are two packages, package A and package B, two algorithms A and B. For processing a database having n is equal to 10 power k records. Package A requires time of 0.0001 n square for processing n records. Package B take a time of 10 into n into log n to base 10. To process n records. तो यहां पर एक बात देखिए आप, very interesting. If you take order of B, it become n log n, and if you take order of A, because this is a constant, it become n square. It become n square. तो आप डायरेक्टली बोलेंगे कि B is better than A. Package B outperforms package A. लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये नहीं है. क्वेश्चन ये है, what is the smallest value of k? This 10 power k, smallest value of k for which package B will be outperforming package A or preferred over A. क्यों? क्योंकि देखिए आप जैसा स्मॉल वैल्यूज ऑफ के लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक के इज इक्वल टू, जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, के इज इक्वल टू 2, तो एन की वैल्यू बन जाएगी 100. तो विथ एन इज इक्वल टू 100, यहां पर आप गौर कीजिए क्या होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए. मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, दिस इज 10 पावर माइनस 4, दिस इज वेरी स्मॉल वैल्यू. 10 पावर माइनस 4 इंटू n is 100, that is 10 square, so it become 10 square whole square 10 power 4. 10 power 4 into 10 power minus 4, टाइम बन गया, टाइम हो जाएगा 1 यूनिट. टाइम इज 1 यूनिट. उसी तरह बी में कितना टाइम लगेगा? 10 इंटू 100 इंटू लॉग ऑफ 10 स्क्वायर, मतलब ये 2 हो गया, 2000 यूनिट्स ऑफ टाइम. तो मतलब क्या हुआ कि अगर n की वैल्यू 100 है, n की वैल्यू 100 है, दैट मीन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2, package B is taking more time than package A. Package B is taking more time than package A. फिर now for example, so therefore now for this case A is preferred. लेकिन क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप वैल्यू ऑफ k बढ़ाओगे, k is equal to 3, k is equal to 4, right? This value starts increasing and a point will come, a threshold point will come, right? From where package A starts taking more time than package B, और वही threshold value k पूछ रहा है, what is that smallest value of k? From where we can say that package B starts performing better than package A. तो हम कैसे solve करेंगे? हम numerical values keep on, we are not going to substitute, right? So here I'm going to write the value of time complexity of package A is 0.001 n square, right? Which is 10 power minus 4 into n square. And the time of B is 10 into n into log n to base 10. So we want the value 10 into n into log n to base 10 to be less than, strictly less than 10 power minus 4 into n square. You want this. We are given that n is equal to 10 power k, यहाँ पर substitute कर दीजिए आप. So therefore this become 10 into 10 power k, ये बन जाएगा k into 10 power minus 4 into 10 power 2k. So this 10 power k and 1k cancels here. So my equation will become k is equal to less than 10 power k divided by 10 power 4, this 10 will come here, it become 10 power 5. I have to find the smallest value of k which satisfy this inequality. देखिए आप, I have to satisfy this, ये equation आपको बनानी है. So I should find that smallest value of k which satisfy. अगर आप k की value 5 ले लेंगे, देखिए आप k की value 5 लेंगे तो ये बन जाएगा 5 less than, this become 1. ये false है. So k is equal to 5 is not satisfying. अगर k की वैल्यू 6 होगी, then this becomes 6 less than 10 power 6 divided by 10 power 5. So this become 10. So 6 is less than 10, it is satisfying. So the smallest value of k for which it satisfy is k is equal to 6. So आप k is equal to 6 से substitute कीजिए, you will find that the time taken by package A will be more than that of B. So that is the answer for this. So therefore, this is the correct answer. So therefore the correct answer is C, as many people have told correctly. चलिए और आगे बढ़ेंगे. Some questions based on loops. Loop complexity के ऊपर भी काफी questions आए हैं.
I am very sure that you are well comfortable with loops. Some typical questions I am taking here for loop complexity. जल्दी बता दीजिए, very straightforward, simple question है. इसकी time complex, इसकी he's not asking time complexity. Look at that. The return value of the function, this is a function, a known function. Return value of this function, I am saying return k. So k is how much? That means I am indirectly asking what is k theta of? The value of k. Value of k is equal to theta of dash. Come on. We are not asking time complexity. Come on, boys and girls, please work out and tell. Interesting question. The value of k is order of dash. Value of k is theta of dash. Read it thoroughly, don't make mistake. A 2-mark question hai, be careful. B. Okay? Many people are saying B. I hope you are working and telling the answer, not looking somewhere here and there, because these are PYQs. Very correct, very correct. Many people are saying correctly. बिल्कुल सही आंसर है बी. ठीक है, देखिए आप, those who have not followed, unfolding से आप कीजिए या आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कीजिए. Outer loop is repeating from n by 2 to n by n, so therefore it is repeating n by 2 times. And this loop, if you observe, it is going from 2 to n and it is getting multiplied by a factor of 2. मतलब अगर आपको एक्सपीरियंस हो, और हमने क्रैश कोर्स में भी देखा था, this loop is repeating for how much time? This loop is repeating for log n time. Right? Log n time. It is repeating for log n time. मतलब k is initially 0. First iteration आप लीजिए, first iteration of I, then second iteration, first iteration of j, right? So it become n by 2. So n by 2 plus n by 2 plus n by 2 log n. मतलब ये जो loop अगर आप complete करोगे for one iteration of the value of I, the value of k will become how much? n by 2 plus n by 2 plus n by 2 log n time. मतलब n by 2 into log n हो जाएगी value of k. At the end of first iteration of the outer loop, first iteration of the outer loop, जब हम ये loop complete कर लेंगे, right? जब ये loop हम complete कर लेंगे तो k की value हो जाएगी n by 2 into log n. n by 2 times we have added log n times. So n by 2 we have added log n times. ये होगा n by 2 into log n. अब उसके बाद क्या होगा? I की value 2 होगी. Next value iteration, third iteration, ये कितने बार repeat कर रहा है? n by 2 times. तो मतलब this value is going to be added n by 2 times. So I have to multiply this with n by 2. Number of times we are repeating. N by 2 into log n plus n by 2 into log n plus n by 2 into log n by 2 times. So therefore I am multiplying by it. तो मतलब k की फाइनल वैल्यू हो गई n स्क्वायर बाई 4 इंटू लॉग n. तो आप इसका ऑर्डर और असिम्प्टोटिक ओमेगा आप ले लेंगे. सो दिस इज नथिंग बट n स्क्वायर लॉग n. ये तो हो गई भैया आपका आंसर बी. करेक्ट है, आंसर बी इज राइट. लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है आपके लिए, प्लीज बॉयज एंड गर्ल्स बी केयरफुल एंड ट्राई टू टेल what is the time complexity of this function. That is important. People confuse there. What is the time complexity of this order of dash? Come on, answer me. Let me see. Don't worry about answers. Don't worry about the options. Don't worry about the options. Time complexity कितनी होगी ये important है. Yes, Chanchal, you are right. Very good. Many people are saying, I am very happy, delighted. मैं सोचा था कुछ लोग गलती करेंगे, नहीं कर रहे हैं आप. मतलब यू आर इन लाइन, बी लाइक दैट, कंटिन्यू विद द सेम रिदम. यस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देन लॉग एन. वैल्यू ऑफ के इज एन स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वैल्यू ऑफ एनी, वैल्यू ऑफ दिस, अगर शायद हो सकता था कोई अगर ऑप्शन यहां पे होता एन लॉग एन, मे बी सम पीपल माइट हैव टेकन एन लॉग एन रॉन्गली एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. फॉर्चुनेटली दैट इज नॉट गिवन, राइट? सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एन लॉग एन, बट वैल्यू ऑफ के इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लॉग एन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए आगे बढ़ेंगे. टेकिंग सम मोर क्वेश्चंस ऑन लूप्स. चलिए इसका भी आंसर मुझे बता दीजिए क्विकली. सिमिलर क्वेश्चन, बट जनरली पीपल मेक मिस्टेक इन दिस ऑल्सो. कम ऑन. Most closely approximates the return value. देखिए आप, he is asking return value of the function. So he is asking return value of the function is order of dash.
Options are these. Yes. That's correct. Option D is correct. Raja Babu, you are wrong. B is not correct. B is not correct. Those who are saying B, be careful. Those who are saying B, be careful. If you say B again, you are making the same mistake. So let's analyze this. Let's analyze this. PQ is 0. I is 1. This is repeating for n times, you can say. P is initialized to 0. This is step 1. This is step 2. Right? We are incrementing P in this loop. This is step 3. We are incrementing Q in this loop. There are 3 steps in this algorithm. Step 1, step 2, step 3. Okay? So this is basically log n time, right? ये log n है. So at the end of the iteration, at the end of this for loop, the value of P will be log n. Because this is getting repeated log n time. मतलब log n होगी इसकी value. फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं हम? For k is equal to 1, k less than P, k is less than log n, and k is equal to k star 2. So this is also log of, not n, log of P. And what is P? P is also log n. So that means this loop is repeating for log n time. This is the final conclusion you have to draw. This loop is repeating for log n time per iteration, and this loop is repeating for log n time per iteration of outer loop. So at the end of this, the value of Q, at the end of this loop, first for one iteration, the value of Q when I am starting from 0 will be log n. Will be log n. तो मतलब फर्स्ट आइटरेशन जब हम करेंगे, P की वैल्यू log n है और Q की वैल्यू log n है. फिर नेक्स्ट आइटरेशन हम जब जाएंगे यहां पर, राइट, P इज रीइनिशियलाइज्ड टू 0, फिर P की वैल्यू log n हो जाएगी, लेकिन Q की वैल्यू हम रीइनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं 0 पर, तो मतलब log n ही रहेगी. सो log n से फिर एक बार log n टाइम ऐड करेंगे, मतलब 2 टाइम्स log n. नेक्स्ट टाइम 3 टाइम्स log n. इसी तरह कितने बार ये रिपीट हो रहा है? ये रिपीट हो रहा है n टाइम्स. तो मतलब फाइनली द वैल्यू ऑफ Q विल बी नथिंग बट n टाइम्स log n. n टाइम्स log n. वेरी करेक्ट. समझ रहे हो? आई होप द पॉइंट इज क्लियर. फर्स्ट आइटरेशन में क्या होगी? दिस इज P इज log n. फर्स्ट आइटरेशन में Q बिकम log n. नाउ Q की वैल्यू 0 नहीं हो रही है, P की वैल्यू 0 हो रही है, तो P की वैल्यू फिर से log n होगी. देन Q गेट्स इंक्रीमेंटेड फ्रॉम log n बाय अनदर log n. तो 2 आइटरेशन के बाद Q की वैल्यू हो गई 2 टाइम्स log n. वेरी करेक्ट. ठीक है? सो देयरफॉर 2 टाइम्स log n, 3 टाइम्स log n, n टाइम्स log n. So therefore the correct answer for this is D. This is the final value of Q. This is the final value of Q. चलिए, ये तो होगा गेट क्वेश्चन. ठीक है? अब मेरे कुछ वेरिएशंस यहां पर मैं पूछूंगा, आप जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए क्या होगा आंसर. ठीक है? फर्स्ट वेरिएशन, कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज बी केयरफुल हियर. Suppose for example in this if I also initialize Q is equal to 0, अब बोलिए मुझे इसका आंसर क्या होगा? अगर मैं Q को भी यहां पर इनिशियलाइज कर दूंगा 0 पर, तो टाइम वैल्यू ऑफ Q फाइनल, इसका आंसर क्या होगा? फाइनल वैल्यू ऑफ Q क्या होगी? डोंट लुक एट द ऑप्शंस. यस, वेरी करेक्ट. श्रीतम स्वेन, यू आर राइट. तो एवरी टाइम Q गेट्स इनिशियलाइज्ड टू 0 हर आइटरेशन में, तो मतलब एक ही बार होगा कि log n, राइट? So every time it loses the value. Very correct. I am very happy. Many people told the correct answer. log n हो जाएगी. चलिए, ये एक वेरिएशन होगा. ठीक है, और एक वेरिएशन मैं पूछूंगा. बॉयज एंड गर्ल्स, बी केयरफुल एंड टेल मी. ये तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा वैल्यू ऑफ Q, जिसका आपने बता दिया log n सही है. लेकिन अगर यही प्रॉब्लम के लिए अगर मैं पिछले क्वेश्चन की तरह आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर पूछता, तो व्हाट वुड हैव बीन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम? कम ऑन. Time complexity of this is order of dash. Very interesting. Like earlier problem, time complexity would have been how much? Will it be same n log n or will it be more than n log n? Time complexity would be more than n log n. That is how much? N log n. Very correct. Many people are telling correct. क्यों? देखिए आप, this loop is repeating for n times. This log n time, this log n time. मतलब step 1 की overall complexity हो जाएगी n, स्टेप 2 की ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n, और स्टेप 3 की ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी होगी n into log n. तो ये तीनों फंक्शंस को आप ऐड करोगे तो ये टाइम ज्यादा है, राइट? n plus n log n plus n log n, इट बिकम ऑर्डर ऑफ n into log n.
The time complexity of this problem is n into log n, whereas the value of q is n into log n. ये बहुत important point है, please remember this. Because sometimes in the GATE exam they have asked on the value, don't get confused with time complexity. Time complexity अलग हो सकती है, value of q अलग हो सकता है, लेकिन some problems में time complexity और value of c दोनों भी same हो सकते हैं, ये भी है. जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन यहां पर लिखूं, if I write one problem, very simple, for I is equal to 1 to n, right? Simple question. C is equal to c plus 1, c is initialized to 0. If I ask for this problem, for example, what is the time complexity and what is the value of c in the order of, come on. आप बोलेंगे time complexity is order of n, value of c is also order of n. Is it not? Value of c is also order of n. उसी तरह अगर और एक लूप हम लिखेंगे, for I is equal to 1 to n, j is equal to I plus 1 to n, c is equal to c plus 1, c is initially 0. What is the time complexity of this and what is the value of c? Come on. Time complexity. Both will be again order of n square. तो यहां पर सेम है, लेकिन पिछले क्वेश्चंस में डिफरेंट था, वैल्यू वाज डिफरेंट एंड देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाज डिफरेंट. सो प्लीज अंडरस्टैंड. So therefore the value of c will be initially 2 to n, so therefore it will be n minus 1 plus n minus 2 plus n minus 3 like that, n into n minus 1 by 2, therefore order of n square units like that. Okay, so be careful with such type of problems. चलिए आगे बढ़ेंगे. और एक क्वेश्चन ऑन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. कम ऑन, बी केयरफुल विद दिस, जनरली पीपल मेक मिस्टेक विद दिस. और एक क्वेश्चन ऑन टाइम ऑन लूप्स. बी केयरफुल विद दिस. 2 mark question. Raja Babu is saying B, Muhammad Asif is also saying B, Dev is saying C, Pritam B Nayak B, many people are saying B, order of n square. ठीक है. Chanchal is saying C, okay. Neha Mishra B. First time many people are having varied answers for this. Fluctuation is between B and C. ठीक है, ठीक है. देखिए आप, हिंट ये है कि दिस इज अ 2 mark question. 2 mark question itself is a hint. मतलब आपको थोड़ा फोकस करना है इस क्वेश्चन पर फोकस करना है. ठीक है, यस. चलिए स्टार्ट करेंगे. देखिए बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज, आउटर लूप एनीवे इज रिपीटिंग फॉर n टाइम्स. इनर लूप क्या हो रहा है यहां पर देखिए आप, j is equal to 1, j is less than or equal to n, and then I'm saying j is equal to j plus I. It is not j plus 1, j plus I. Is asking time complexity of this, not any return value or printing. j is equal to j plus I. First type क्या होगा? Please observe. I is equal to 1, so this is going to be incremented by 1 time. So that means the first time this is going to repeat for n times. ठीक है? First iteration I is equal to 1, it is going to repeat n times. Second iteration I की value 2 होगी. Boys and girls be careful, I की value 2 होगी. So this is going to get incremented by 2. Again starting from 1 getting incremented by 2. So देखिए आप, if I write a loop j is equal to 1 and then j is less than or equal to n, and if I write j is equal to j plus 2, अब मुझे बताइए ये लूप कितने बार, ये अगर फर्ज करिए या एनी है, तो ये लूप बताइए आप मुझे कितने बार रिपीट होगा. ये लूप कितने बार रिपीट होगा? n टाइम्स रिपीट होगा? नो, इट विल नॉट increment n times, n by 2 times. Is it not? Is it going to repeat n by 2 times or not? Correct. Dev and Ankit Singh has told correctly. ये loop repeat होगा n by 2 times. मतलब next time the iterations made will be n by 2 of the second loop. First time n, second time I is equal to 1, n, I is equal to 2, n by 2 times. उसी तरह I की वैल्यू अगर फर्ज करिए 3 है, तो ये लूप बन जाएगा j is equal to 1, j less than or equal to n, j is equal to j plus 3. अब बताइए आप, फॉर लूप रिपीट होगा कितने टाइम्स? j plus 3.
तो n/3 टाइम्स रिपीट होगा, नेक्स्ट टाइम n/4 रिपीट होगा, उसी तरह इंक्रीज होते होते n/n रिपीट होगा, n/1 प्लस n/2 प्लस n/3 प्लस n/4, राइट। तो n कॉमन आप बाहर ले लीजिए, आपकी सीरीज हो गई सिग्मा 1/x, x इक्वल टू 1 to n, ये होगा आपका फंक्शन, करेक्ट सुमित, यू आर एब्सोल्युटली राइट। And we have already told in crash course also, sigma 1/x series, harmonic series is nothing but which function? It is nothing but log n. Very correct, Chanchal. So therefore, this is nothing but n into log n. Generally, I thought people will get confused with n root n. Some people will get confused this as n root n. I thought you would say n root n, but many people, I don't know why they said n square. So therefore, this is order of n log n. Matlab, C is correct. I hope you got the point. तो बी केयरफुल बॉयज एंड गर्ल्स, व्हेनेवर नेस्टेड लूप्स अगर दिए गए हैं तो आप अच्छे तरीके से कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि लूप इंडेक्स कैसे रिपीट हो रहा है, और देन अनफोल्ड कीजिए आप, फर्स्ट आइटरेशन में क्या हो रहा है, सेकंड आइटरेशन में क्या हो रहा है, थर्ड आइटरेशन में क्या हो रहा है, उस तरीके से आप करिए, फिर समेशन बनाइए, यू डायरेक्टली गेट द आंसर। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन, आई वुड से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई विल गिव यू 2 minutes ऑफ टाइम, अच्छे तरीके से रीड कीजिए क्वेश्चन और समझिए, देन यू अप्लाई ऑल योर डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज दिस समवॉट रिलेटेड क्वेश्चन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। तो अप्लाई कीजिए कॉन्सेप्ट अच्छा, देन यू फॉर्मुलेट द आंसर। आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रॉब्लम इज बेसिकली कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आ चुके हैं। मैं एक मॉडल जो इंपॉर्टेंट है यहां पर डिस्कस कर रहा हूं आपके लिए। कम ऑन, फर्स्ट यू ट्राई, आई विल गिव यू 2 minutes ऑफ टाइम। मैं ये चाह रहा हूं आंसर आप मत बताइए, लेकिन अपने तौर पर एक टेबल बनवा लीजिए, वो टेबल में पूरे वैल्यूज फिलअप करिए फॉर ऑल दीज डेटा स्ट्रक्चर्स। ये पूरे डेटा स्ट्रक्चर्स के ऑपरेशंस के वैल्यूज फिलअप कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बॉयज एंड गर्ल्स। डू नॉट बी इन हरी टू गिव द आंसर। टेबल आप फिलअप कीजिए, मैट्रिक्स आप फिलअप कीजिए। तपन घोष, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, डोंट बी इन हरी टू टेल द आंसर। आपने इतना जल्दी आसानी से आप वो टेबल या मैट्रिक्स फिलअप नहीं कर सकते हो। पहले वो मैट्रिक्स फिलअप कीजिए, प्लीज फिलअप दैट मैट्रिक्स। रोज आपके होंगे, मैट्रिक्स के रोज होंगे डेटा स्ट्रक्चर्स, अनसॉर्टेड अरे, मिनिमम हीप, सॉर्टेड अरे, डब्ल्यू लिंक लिस्ट, और फिर कॉलम्स होंगे आपके ऑपरेशंस, फाइंड ऑपरेशन, इंसर्ट ऑपरेशन एंड डिलीट ऑपरेशन, डिक्रीज की ऑपरेशन। जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स में वैल्यूज फिलअप कीजिए आप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा टाइम लगेगा, इसे 2 मिनट लगेगा, इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं, बट दैट विल बी अ वेरी गुड एक्सरसाइज। उसके बेसिस पर आप कई क्वेश्चंस, इसके बेसिस पर आप वेरिंग क्वेश्चन बना सकते हो, और वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बना सकते हो। मैं मान के चल रहा हूं कि आप मैट्रिक्स फिलअप कर रहे होंगे। ओके, वेरी गुड। सुमित, don't make guesses. Fill up the matrix. I'm saying answer is not important. What is important is the values of the matrix are very important here. बार बार मैं आपको वही बता रहा हूं कि values of the matrix are important.
Have you filled up the matrix? Shall we start? Come on, boys and girls, shall we start? चलिए, अब तक तो some students have said the answer as B and some said min heap, some are saying. चलिए स्टार्ट करेंगे, बट टेल मी, एक बार आंसर बता दीजिए आप क्या है। मैं स्टार्ट करने से पहले एक बार आंसर बता लीजिए, क्या है आपका आंसर? डी। ओके, डी, डी, ठीक है। व्हाट अबाउट चंचल? मूवी यू आर सेइंग सी। नेहा मिश्रा, वेरी गुड, डी। ओके, आई वुड लाइक टू सी द रेस्पॉन्सेस फर्स्ट बिफोर आई स्टार्ट। चलिए, बी और सी और डी भी है ऑप्शंस। महविद इज सेइंग बी। ओके, नो कमेंट्स। सत्यम विनायक, यू कैनॉट से लाइक दैट। चंचल नॉट गेटिंग। ओके, ठीक है, चलिए विल स्टार्ट। कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, बी केयरफुल, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, विल सी इट। ये टेबल है हमारा, राइट। लेट अस टेक दिस लाइंस। 4 डेटा स्ट्रक्चर्स है, सो 4 लाइंस हम ले लेंगे यहां पर, 4 रोज। चलिए, then I have here, for example, how many operations? Let me see. We have find operation, insert operation, delete operation and decrease की 4 operations है। तो यहाँ पर operations ले लेंगे, columns 1, 2, ठीक है। तो ये है आपकी अनसॉर्टेड अरे। मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछूंगा, आप रिस्पॉन्ड देते जाइएगा, सो दैट यू हैव प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। और सेकेंड डेटा स्ट्रक्चर ऑप्शन बी है मिन हीप। मिन हीप। फिर सेकेंड है आपका सॉर्टेड अरे। फोर्थ ऑप्शन है सॉर्टेड डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट, ये है आपका ऑप्शन, ठीक है। चलिए, और यहां पर हम ऑपरेशंस लिख लेंगे। फाइंड ऑपरेशंस, फिर इंसर्ट ऑपरेशन, फिर डिलीट ऑपरेशन, और यहां पर है डिक्रीज की ऑपरेशन, डिक्रीज की। और यहां पर यह भी दिया गया है कि नंबर ऑफ फाइंड ऑपरेशंस है log n पावर हाफ, रूट log n। ये इतने ऑपरेशंस आप फाइंड कर रहे हैं ये एल्गोरिथम में। और n इंसर्ट ऑपरेशंस है, कैपिटल N और स्मॉल n, भी से स्मॉल n। और डिलीट भी है रूट log n। नंबर ऑफ डिलीट ऑपरेशन जो आप एल्गोरिथम में परफॉर्म कर रहे हो, रूट log n है। और नंबर ऑफ डिक्रीज की ऑपरेशन भी जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, log n पावर हाफ। ये हो गया आपका ऑप्शन। इस तरीके से आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, राइट। अब चलिए वन बाय वन मैं पूछूंगा, आंसर दीजिए मुझे। अनसॉर्टेड अरे है, अरे इज नॉट सॉर्टेड, राइट। एंड द लिस्ट इज हैविंग, अरे इज हैविंग फॉर एग्जांपल ऑफ साइज n एलिमेंट्स, then tell me what will be the time complexity for one find operation to find an element in an unsorted array. To find an element in an unsorted array, how much time does it take? n. Very good, n. और कितने फाइंड ऑपरेशंस है? रूट log n है, रूट log n। तो मतलब इंडिविजुअल ऑपरेशन टाइम इज n। चूंकि रूट log n नंबर ऑफ टाइम्स वी आर फाइंडिंग, सो देयरफॉर टोटल टाइम, मतलब ये इंडिविजुअल टाइम है, ये टोटल टाइम मैं यहां पर लिख रहा हूं। टोटल टाइम आपका हो जाएगा n इंटू log n पावर हाफ। ये ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। टोटल टाइम फॉर फाइंड, these are total number of total operations. These are total operations. So one time operation is n. So root log n operation will be n into root log n. ठीक है, this is okay. अब insert पे आ जाइए, insert पर। To insert an element in an unsorted array, unordered unsorted array, what will be the time taken? What will be the time taken? Constant 1, constant time. आप कहीं भी जाके इंसर्ट कर दीजिए, क्योंकि अनऑर्डर्ड अरे है, तो यूनिट टाइम आपका लग जाएगा 1 कांस्टेंट, और नंबर ऑफ ऑपरेशंस है n, सो टोटल टाइम आपका हो जाएगा n। अगेन फिर से बता रहा हूं मैं, दिस यूनिट ऑपरेशन, दिस टोटल ऑपरेशन। एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए टाइम है, ये टोटल है।
चलिए, डिलीट के लिए कितना होगा, यूनिट ऑपरेशन डिलीट के लिए कितना होगा बॉयज एंड गर्ल्स, बी केयरफुल, डिलीट के लिए कितना होगा, डिलीट अनसॉर्टेड अरे है, यहां पर मिस्टेक कर रहे हो आप लोग, अनसॉर्टेड अरे है, अनसॉर्टेड अरे, अनसॉर्टेड अरे में डिलीट ऑपरेशन मिनिमम टाइम कितना लेगा, n नहीं लेगा, 1 लेगा, यही मिस्टेक कर रहे हो आप। 1 पे कर सकते हो आप, विथ 1 कांस्टेंट टाइम कर सकते हो, कैसे करेंगे कांस्टेंट टाइम, शिफ्टिंग इज नॉट नीडेड, अंकित सिंह यू आर राइट, शिफ्टिंग इज नॉट नीडेड, जो भी एलिमेंट आप डिलीट कर रहे हो वो पता है, जो पॉइंटर है डिलीट पे, पॉइंटर है डिलीट, पॉइंटर है डिलीट, एलिमेंट जो डिलीट करने हैं वो पॉइंटर है, वो एलिमेंट को आप लास्ट एलिमेंट से एक्सचेंज कर दीजिए, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, फिनिश, डिलीटेड, ठीक है। तो यूनिट टाइम इज 1, number of operations root log n, so therefore total time become root log n. Similarly डिक्रीज के लिए भी उतना ही होगा 1, और टोटल टाइम बन जाएगा log n पावर हाफ, ये है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट, प्लीज अंडरस्टैंड डिलीट ऑपरेशन। ओके, चंचल इज सेइंग यू हैव नॉट अंडरस्टूड, प्लीज फॉलो मी। Unsorted array, take an array, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These are the elements X, Y, Z, P, Q, R, T. This array A is not sorted. Now I want to delete, for example, third element. मुझे delete कर देनी है, तो मैं क्या करूंगा, I will swap Z and T. मैं T को यहां पर ला लूंगा, Z को यहां पर लाके मैं बोलूंगा my array size has become A of 6. The element is deleted. And it is unsorted array. I don't have to bother. Am I right? Neha Mishra, don't worry who is studying in which year, who has already completed on that doesn't make any sense. Don't go for relative performance comparison. ठीक है ना, यहां तक ठीक है, इस फर्स्ट रो क्लियर, फर्स्ट रो क्लियर है, वेरी गुड। तो टोटल टाइम बता दीजिए बच्चे, यहां पर हम बोलेंगे टोटल टाइम ऑफ द एल्गोरिथम, टोटल टाइम ऑफ एल्गोरिथम विद फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर कितना होगा, एड अप ऑल द फंक्शंस, n रूट लॉग n प्लस n प्लस रूट लॉग n प्लस रूट लॉग n, टोटल टाइम होगा आपका एल्गोरिथम का, इफ आई यूज अनसॉर्टेड अरे, ऑर्डर ऑफ n इंटू रूट ऑफ लॉग n, ठीक है, यहां तक सही है, ये हो गया फर्स्ट आंसर। अब मैं छोटा फिर एक बार 1 या 1.5 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम टाइम दूंगा। अब ये बेसिस पर, अब जब मैंने आपको फर्स्ट रो समझा दिया है, ये बेसिस पर अब आप रिमेनिंग 3 डेटा स्ट्रक्चर्स का वर्कआउट कीजिए, टेबल मैट्रिक्स फिलअप कीजिए, और अब मुझे बताइए आंसर क्या होगा, देखेंगे। अगेन आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी। मूवी शू टीवी, it is given that the element which you want to delete is already being pointed by a pointer। देखिए आप रीड कीजिए क्वेश्चन, delete, for a delete operation a pointer is provided to the record that must be deleted, pointer is provided, I don't have to search, be careful, रीड करना जरूरी है क्वेश्चन अच्छे तरीके से। अब बताइए मुझे, नेक्स्ट वर्कआउट कीजिए नेक्स्ट वैल्यूज, एंड देन एटलीस्ट नाउ यू ट्राई टू टेल मी द करेक्ट आंसर। यस, आई एम गिविंग यू 1.5 मिनट ऑफ टाइम। क्या अब आप अपना आंसर दोगे? विकास टेक इज सेइंग ए नाउ, ओके। डेटा स्ट्रक्चर की कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन देख लीजिए आप, यही है क्वेश्चन। घोष, सुब्रनील घोष, यू हैव टू डू ऑन योर ओन फर्स्ट। मैं तो यहां पे करूंगा, ये मैं फिलअप करूंगा वैल्यूज, लेकिन आप अपनी तरीके से तो कीजिए पहले। Anybody now would like to change the answers? क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं आप, ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन एक बार।
Pointer is provided to the record that you want to delete and pointer is also provided to the record that its key is decreased. दोनों pointers है, जो record को आप delete कर रहे हो और जो record की value decrease कर रहे हो उसका pointers दिया गया है यहां पर. Chanchal is saying answer A, okay. That means you have fill up the matrix. Come on, other people also please try. This is very interesting problem. इसलिए मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूं ये प्रॉब्लम पर. Mishra is saying C. देवेंद्र मिश्रा, शिफू कादिर C. Be careful. पूरे वैल्यूज अच्छे तरीके से फिलअप कीजिए with profound understanding of data structures. Hirtik Anand is saying A. Okay. Now people have changed their responses. When I initially asked, people were giving different responses. Ankit Singh is saying confused between A and B. Okay. चलिए स्टार्ट करेंगे. min heap, बच्चों बता दीजिए. given a heap with n elements, given a heap with n elements, right? min heap or max heap जो भी हो, right? Given a min heap, given a heap with n elements, to find any element, how much time does it take? How much time does it take? How much time does it take to search for an element in a heap? हम यहां पर delete insert की बात नहीं कर रहे हैं. To search for an element in a heap. Just a second, battery level is low. इधर Okay, there was some issue. Am I audible and visible? Am I clear? Bachcho, boys and girls. Is it clear now? Yes, okay. चलिए करेंगे. Yes. Yes, there was a slight issue with regard to the battery. Now it has been overcome. So let's continue. Min heap. चलिए मैं ये पूछ रहा हूं था कि min heap क्या हो. min heap में अगर आप कोई एलिमेंट सर्च कर रहे हो तो टाइम लगेगा n. मोहम्मद आसिफ, यू आर राइट. So therefore unit time is n. Total time it become n into log n power half like earlier occasion. हाँ, यहां पर इंसर्ट ऑपरेशन आपने हीप में पढ़ा, हमने क्रैश कोर्स में भी देखा. गिवन अ हीप विथ एन एलिमेंट्स, इफ यू वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू अ हीप, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन द वर्स्ट केस विल बी log n. मतलब log n is the time for one element, and for total n elements or n operations I will require time of n log n. उसी तरह one delete operation will take time of log n, right? And this will take log n into log n, root log n.
So therefore this total time will become log n power 3/2. मतलब n log n root log n, ये total time होगा. Unit time, total time. Time of one operation, total operation time. उसी तरह decrease key will also take unit time in heap of log n, और root log n is the number of operations. ये भी total time आपका हो जाएगा log n power 3/2. तो इसी तरह based on this अगर आप total time calculate करेंगे based on heap, तो total value आपकी आ जाएगी. देखिए आप n into root log n, n into log n, this is log n power 3/2, log n power 3/2, the largest value is n log n. मतलब time for heap is more than time for unsorted array. Yes, delete operation is log n. We have proved it. Ankit Singh. If the insert operation take log n time, delete operation take log n time, and decrease key operation in a heap take log n time. These are standards. Am I right? Delete operation in a heap. We have discussed that in crash course. Shifu Qadir, is it not log n, please? Come on, other people. heapify, adjusting root. जब आप डिलीट कैसा करोगे आप? जस्ट एक स्मॉल एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं. इफ यू वांट टू डिलीट द रूट, यू विल फर्स्ट एक्सचेंज दिस फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट. Yes, exchange the first and last element and adjust the root. That will take the height or depth of the tree, log n time. Come on, boys and girls, at this juncture, ये questions हम ये चीजें हमें discuss करना नहीं है. I am believing that you know all these things. I mean, inserting an element will take log n time in a heap, deleting an element will take log n time in a heap, and then decreasing the key also we proved to be taking log n time. अगर आप यहाँ पर how पूछेंगे तो then it become difficult for me, right? So understood, very good. So देखिए आप log n for one operation, total operation कितने हैं? root log n. तो log n into root log n की वैल्यू क्या होगी? log n into log n power half की वैल्यू क्या होगी? This is log n power 3/2. Come on, boys and girls. log n into root log n is log n power 3/2. ठीक है, चलिए मीन हीप हो गया. अब आइए सॉर्टेड अरे पे. Come on, जल्दी मुझे बता दीजिए सॉर्टेड अरे पे. Finding an operation in a sorted array, one unit will take how much time? Come on, sorted array में yes, log n time होगा 1 unit. Binary search, total time कितना हो जाएगा? log n into log n power half, which is log n power 3/2. ठीक है. Unit operation in a sorted array will take how much time? Very interesting, be careful. एक array sorted है, उसमें आपको एक insert करना है element, तो maximum कितना time लगेगा? मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? यहां पर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स. चंचल, इट इज नॉट लॉग एन, बी केयरफुल, इट इज नॉट लॉग एन. एक बाइनरी सर्च से आप पोजीशन फाइंड कर सकते हो, लेकिन इंसर्ट करने के लिए आपको स्वैपिंग करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा एलिमेंट्स, तो वर्स्ट केस में एन लगेगा. करेक्ट. मैं यहां पे नंबर ऑफ कंपैरिजंस नहीं पूछ रहा हूं, मैं कंपैरिजंस नहीं टाइम पूछ रहा हूं. टाइम के लिए आपको मूव करना पड़ेगा वर्स्ट केस में ऑल एन एलिमेंट्स. सो देयरफॉर आई वुड से बेसिकली एन, और टोटल टाइम होगा n into n, that is n square. It is n square. This is important. Shifting required, correct. ठीक है. डिलीट ऑपरेशन, तो डिलीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? यहां पर भी अगर वर्स्ट केस में आप फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करें तो फिर आपको वही स्वैप करना पड़ेगा, वही आपको स्वैप करना पड़ेगा. तो देयरफॉर डिलीट विल आल्सो टेक इन द वर्स्ट केस n, राइट? व्हेन यू आर डिलीटिंग द फर्स्ट एलिमेंट यू हैव टू स्वैप ऑल अदर एलिमेंट्स. तो देयरफॉर यहां पर आपकी बन जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी n into root log n. उसी तरह डिक्रीज के लिए भी वही टाइम लगेगा n, और टाइम टोटल हो जाएगा n into root log n. ठीक है. और ये बेसिस पर आप बोलोगे टोटल टाइम फॉर दिस डेटा स्ट्रक्चर इन द एल्गोरिथम वुड बिकम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, मच मोर. फिर उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट, सॉर्टेड डबली लिंक लिस्ट. ये तो और कॉम्प्लेक्स हो गया स्ट्रक्चर. तो ये भी डबली लिंक लिस्ट है. आपको वर्स्ट केस में पर ऑपरेशन यू नीड n यूनिट्स लाइक सॉर्टेड अरे, क्योंकि एटलीस्ट ये अरे थी, ये डबली लिंक लिस्ट है. लिंक लिस्ट में आपको टाइम n लगेगा. बाइनरी सर्च आप यू कैनॉट परफॉर्म बाइनरी सर्च, सो देयरफॉर n, और टोटल टाइम आपका बन जाएगा n into root log n, राइट?
So sorted doubly linked list में insert operation, in the worst case you will have to again say n and this will become again n square. Sorted doubly linked list में ये important है यहाँ पर. Delete operation if our doubly linked list will take how much time? Delete operation in a doubly linked list take how much time? Data structure में आपने पढ़ा होगा. अंकित सिंह, you are right. So therefore 1 unit. मतलब ये होगा सिर्फ log n power half. ये एक advantage है doubly linked list का. Doubly linked list में आप देखिए, basically the doubly linked list is performing best operation, efficient operation, delete. Delete कर रहा है. Doubly linked list का एक ही advantage है, delete operation is the least. Decrease की में भी worst case you have to do n, so therefore इसका भी operation time बन जाएगा n into log n power half. So therefore the overall complexity of the algorithm will be order of n square. ये होगा आपका final analysis. This is one of the important questions. That's why I have put full focus on this. Right? इस तरीके से आपको करना है ऐसे प्रॉब्लम, जिसके लिए आपका डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस की कॉम्प्लेक्सिटी भी क्लियर होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर पाओगे. लेकिन मेरी आपसे अपील यही है कि आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से रीड कीजिए, देन यू अप्लाई द कॉन्सेप्ट. So therefore eventually n into root log n is lesser than n log n square. So therefore the correct answer is unsorted array. अगर इस तरीके की एनालिसिस अगर आप नहीं करते, जैसे आपने सोचा था पहले शायद min heap अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है या sorted array अच्छी डेटा स्ट्रक्चर है, that is why many people initially opted for B and C but nobody cared for unsorted array. लेकिन unfortunately, right, unfortunately unsorted array is performing better than min heap and sorted array, is it not? So that is the answer for this. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, वरना आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी, लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हो तो इमीडिएटली ले सकते हो आप. If you want to take the screenshot of this, you take it because it's very important derivation. But kindly remember, this is not divided by, otherwise you will go wrong. This is not divided by. Yes, A बाजी मार लिया बिल्कुल. राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे. एक सिंपल मैच द पेयर है बेस्ड ऑन सम प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज. आई एम वेरी श्योर यू कैन डू इट. टवर्स ऑफ हनॉय विथ एन डिस्क, आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा. टवर्स ऑफ हनॉय, बाइनरी सर्च, हीप सॉर्ट, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, n क्रॉस n मैट्रिसेस. टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज डायरेक्टली आप मैच कीजिए. यहां पर हम लिख लेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज. टवर्स ऑफ हेनाई की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑलवेज रिमेंबर ऑर्डर ऑफ 2 power n, क्योंकि उसकी जो रिकरेंस बनती है आपने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर्स में, 2 into t of n-1 प्लस कांस्टेंट. तो आप ये अगर सिंप्लीफाई कर लोगे तो डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ 2 power n, ऑर्डर ऑफ 2 power n. राइट. तो बाइनरी सर्च फॉर, आपको पता है दिस इज नथिंग बट log n. हीप सॉर्ट, इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिस्ट आपको मालूम होना चाहिए, n log n. एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस इज n square. तो ये बेसिस पर है, आप मैच कर सकते हो. पूरे ऑप्शंस है, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. यहां पर नेक्स्ट पेज पे है ऑप्शंस, दैट इज द थिंग. ठीक है. तो P इज हाउ मच? P इज 3. P इज 3, Q इज 4. So therefore this is the option. I hope that is the correct answer. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. अब इसका भी एक जल्दी बता दिए, ये भी एक स्टैंडर्ड रिकरेंस है. आई एम वेरी श्योर यू हैव डेफिनेटली वर्कड आउट दिस. कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, वर्कआउट. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. आई होप यू रिमेंबर दिस ओरली. यू शुड रिमेंबर दिस क्वेश्चन ओरली. हीप सॉर्ट यूजिंग heapify is order of n log n. Correct. Order of n log n. Correct. Not order of n square. Ankit Singh. heapify is order of n. Heap sort is order of n log n. इसका आंसर बताइए प्लीज. अंजलि शू, अंजलि साहू, इट इज नॉट ए. इट इज नॉट ए. बी केयरफुल. इट इज नॉट ए. दोज हु आर सेइंग, कम ऑन, पीपल हैव स्टार्टेड सेइंग ए. इट इज नॉट ए. बी केयरफुल. दिस इज 2 times 2 of root n. अगर मेरा रिकरेंस हो t of n is equal to t of root n plus constant, then this is order of log n. Be careful boys and girls. मैं क्रैश कोर्स में भी बताया था. लेकिन अगर मेरा रिकरेंस हो t of n is equal to 2 times t of root n plus 1, आप या तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो या मास्टर मेथड से भी कर सकते हो रिकरेंस. So therefore the correct answer is log n.
द करेक्ट आंसर इज log n. बी केयरफुल, ये स्टैंडर्ड रिकरेंसेस है, आप इसे रिमेंबर कीजिए प्लीज. यू डोंट हैव टू स्ट्रिक्टली वर्कआउट दिस, डायरेक्टली यू कैन टेल द आंसर. So this is order of log n. Be careful. This 2 times अगर जब होगा तो log n होगा, अगर 1 time t of root n होगा तो आंसर log n होगा. Please remember that. That is very important. Yes. चलिए और आगे बढ़ेंगे. I think yeah. ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है. I think recent क्वेश्चन है 2020 का. इसका भी मुझे जल्दी बता दीजिए आंसर. थोड़ा वेरिएशन है प्रीवियस क्वेश्चन का. प्रीवियस क्वेश्चन का वेरिएशन है, लेकिन आई एम वेरी श्योर यू कैन वर्क आउट. यस, चेंज ऑफ वेरिएबल. यू कैन वर्क आउट एंड टेल मी द आंसर. For parameters a and b, both of which are omega of 1, that means the order of 1 you can take. T of n is t of n power 1 by a plus 1, and t of b is equal to 1, then what is t of n? What is the answer for this? Yes. 2020 का क्वेश्चन है, recent year. आप अगर एक दो स्टेप में इसे वर्कआउट कर लूंगा मैं. टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन पावर 1 बाई ए रूट ऑफ एन प्लस 1. अगर आप बैक सब्स्टिट्यूशन से करते जाएंगे इसे, ए लेवल विल कम वेयर यू कैन राइट इट दिस इक्वेशन एज एन पावर 1 बाई राइट ए पावर के. इफ इट गोज इनटू रिकर्शन ऑफ डेप्थ के, फर्स्ट सेकेंड आइटरेशन में ए स्क्वायर प्लस 2 ए क्यूब प्लस 3 ए पावर के प्लस के. It become like this. कैसे सिंप्लीफाई करना है मैं यहां पर लिख रहा हूं मैं. It become like this, generalized form, such that this value should get annihilated. मतलब this should be equated to b, such that it become t of b, where t of b is 1. It gets simplified. मतलब ये है n power 1 by a power k should become equal to b. अब यहां से हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करना है. यहां से हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे? log ले लेंगे सबसे पहले. तो हम फर्स्ट टाइम अगर log लेंगे तो दिस बिकम a पावर k इंटू log n टू बेस 2 इज इक्वल टू log ऑफ b टू बेस 2. राइट? तो ये बेसिस पर हम लिखेंगे a पावर k इज नथिंग बट log ऑफ n टू बेस 2 डिवाइडेड बाई log b टू बेस 2. वो बन जाएगा log n टू बेस b. ये हो गई वैल्यू. फिर इसके बाद ये इक्वेशन में फिर एक बार आप log ले लीजिए. राइट? इट बिकम k इंटू log ऑफ a टू बेस b टू बेस 2 इज इक्वल टू log of n to base b to base 2. So therefore k is nothing but log of log n to base b to base 2 divided by log a to base 2. So this is nothing but finally using property of log of base a of log n base b. ये है हमारा आंसर k. So if you substitute here k, this is t of b, which is 1 plus k, which is nothing but this value. Log of a, log to base a, log of n to base b, ये करेक्ट आंसर है b. इस तरीके से आएगा. ठीक है? So that is the approach. चलिए और आगे बढ़ेंगे. अब क्वेश्चंस ले लेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर के. तो डिवाइड एंड कॉन्कर में मैं यहां पर मान के पहले आपसे अज्यूम कर रहा हूं कि यू आर वेल फेमिलियर, वेल कन्वर्जेंट विद मास्टर थ्योरम. मेनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड बेस्ड ऑन मास्टर थ्योरम. वही मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं. तो आई होप you know all the 3 cases of master theorem, case A, case 1, case 2, case 3. Just to summarize, case 1 is based on big O, case 2 is based on theta, case 3 is based on omega. मैं यहाँ पर cases नहीं लिख रहा हूँ, right? So I'm making a firm assumption that you know all the cases of master theorem. ठीक है? So based on master theorem itself, my first question comes. Tell me, this is GATE 2021, very recent paper, 2021. 2021 का क्वेश्चन है फॉर आई थिंक 2 marks. What is the correct answer for this? It is based on cases of master theorem, direct cases. Which is the correct option among A, B, C, D? Before I show the options. Very, very simple. Yes, yes. Some people are saying A, मतलब आपको मास्टर थ्योरम के केसेस नहीं पता है. फर्स्ट केस ऑफ मास्टर थ्योरम यहां पर अगर मैं लिखूं, फर्स्ट केस ऑफ मास्टर थ्योरम, फर्स्ट ऑफ ऑल द रिकरेंस शुड बी ऑफ व्हाट फॉर्म? A into T of n by B plus f of n, right? So f of n is order of n power log A to base B minus epsilon, right?
for some epsilon, some value of epsilon greater than 0, then we claim that T of n is theta of n power log a to base b. ये है केस 1, ये है केस 1. और जो हमारा प्रॉब्लम था वो एग्जैक्टली बेस्ड ऑन केस 1 ही था. देखिए आप, f of n is theta of n power log a to base b, ये नहीं हो सकता. f of n is theta of n power log b, because every theta is order of n power log a to base b minus epsilon. For some epsilon greater than 0, then T of n is theta of n power log a to base b. Very correct. So therefore ऑप्शन बी इज करेक्ट. चलिए अब ये बेसिस पर हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ले लेंगे. यहां पर आप मुझे बताइएगा, इसका आंसर बता दीजिए बेस्ड ऑन मास्टर मेथड, मास्टर थ्योरम. 2009 का 2 मार्क क्वेश्चन है. वेरी सिंपल. विच केस अप्लाइज? मुझे केस बताइए. विच केस अप्लाइज? Which case applies to this? Come on. Case B. Case 1, 2, 3 लिखिए. Case 1, case 2, case 3. Case 2 is not theta. Case 2 is theta है. Which case applies? Here the value which case apply? Case 2. No, case 2 is not correct. Case 2 is theta. Case 3 apply. नहीं भाई नहीं है. Case 3 is correct. See here, the value of a is equal to 0. Sorry, a is equal to 1. A is equal to 1. B is equal to 3. F of n is equal to n. Constant multiplied by n. So what is log a to base b? Log 1 to base 3. Log 1 to base 3 is 0. Right? Can I say, case 1, I'm checking for case 1. Can I say n, is it order of n power 0 minus epsilon? ये ऐसा हो सकता है? नहीं. n is greater function than this, ये नहीं हो सकता. Case 1 is rejected. क्या case 2 apply होगा? n, is it theta of n power log a to base b 0 into log n power k? देखिए आप, n is not theta of log n, n is greater than log n. Case 2 नहीं होगा. Case 3, n, is it omega of n power 0 plus epsilon? Yes, this is true. For epsilon is equal to 1, perfectly satisfying, and 1 is greater than 0. And moreover, there is a second condition to be fulfilled. A into f of n by b less than or equal to delta times f of n. Case 3, a is 1, f of n is n, n by 3 become n by 3. n by 3 is less than or equal to delta times n. For delta is equal to 1 by 3, 1 by 3 is less than 1, perfectly satisfying case 3. So by case 3 हम क्या बोलेंगे? When case 3 applies, f of n is, sorry, t of n, function t of n is theta of f of n. So what is f of n here? Tn, that is theta of n. So the correct answer is A. ठीक है? That is the approach of solving this problem. चलिए आगे बढ़ेंगे. इसका जल्दी बता दीजिए based on master method again. Which case applies? Come on. Which case applies? केस बता दीजिए और आंसर भी बताइए. Yes, A is correct, because again case 1 applies. Case 1 applies because log n is order of n power log a to base b minus epsilon. Yes, if you take epsilon is equal to half root n, log n is order of root n. Case 1 apply. So log a to base b, that is theta of n. Case 1 apply. Very correct. चलिए आगे बढ़ेंगे. इसका भी जल्दी आंसर बताइए. ये भी एक गेट 2016 का क्वेश्चन है बेस्ड ऑन फ्लो चार्ट. मास्टर मेथड से भी कर सकते हो आप इसे, लेकिन उससे पहले आपको रिकरेंस डिराइव करना है. यू नीड टू डिराइव द रिकरेंस. न्यूमेरिकल क्वेश्चन, नैट. वर्स्ट केस यहां पर वर्स्ट केस में पूछ रहा है.
if the worst case time complexity of the function is order of n power alpha, then the least possible value accurate up to 2 decimal positions of alpha is dash. Flow chart is very small. देखिए आप, this is a of n by 2. हर जगह a of n by 2 है. a of n by 2, a of n by 2. Everywhere it is like that. a of n by 2. Everywhere. वर्स्ट केस का इक्वेशन क्या बनेगा, क्या लिखोगे आप वहां पर, मुझके लिख के बताएंगे. what will be the worst case equation? T of n, what will be in the worst case T of n? Come on. What will be T of n in the worst case? Can you write? Yes. T of n, जब हम algorithm का name है, function का time है t, तो worst case will happen when the algorithm does maximum work. तो कितने सब problem solve करेगा? 1, 2, 3, 4, 5. क्योंकि ये पाथ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, यहां पर 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, यहां पर 3, यहां पर 5. तो मतलब माई इक्वेशन विल बिकम 5t n by 2 प्लस कांस्टेंट. मास्टर मेथड से आप इसे सॉल्व करोगे तो दिस इज केस 1 अगेन, बिकॉज कांस्टेंट इज ऑर्डर ऑफ n पावर log 5 to base 2 minus epsilon. This is true. What is the value of log 5 to base 2? Log 5 to base 2 is 2.32. So therefore, the value of this equation is n power log of 5 to base 2. The value of log 5 to base 2 is nothing but n power 2.32. So therefore, the value of alpha is 2.32. This is the answer. Not n square, Anjali. It is not n square. I hope you got the point. How it is 2.32. चलिए आगे बढ़ेंगे. ये आप वर्कआउट कर सकते हैं. इसके लिए मैं आपको हिंट दूंगा. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम लेटेस्ट पेपर गेट 2021. अगर आपने ना पढ़ा हो तो आप जरूर पढ़िए. एक टॉपिक है अदर देन मास्टर मेथड, रिकर्शन ट्री अप्रोच ऑफ सॉल्विंग रिकरेंसेस. अगर आप epsilon की value, you can take a very small value. In the previous problem somebody is asking what should be epsilon. Epsilon you take a very very small value, no problem, much less than 2.32. So therefore you can take a small value and do it. So recursion tree approach, if you have not studied, please study this either from the textbook of Corman or maybe from other textbook of algorithms. How can we solve asymmetric recurrences? This is an example of asymmetric recurrences. Asymmetric का मतलब यह है साइज ऑफ सब प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट. ये n by 2 है, 2n by 5. तो मैंने क्रैश कोर्स में भी आपको बताया था, whenever you are having asymmetric recurrences, the best way of solving such problems is by means of recursion tree. जैसा इसका आप recursion tree बनाओगे, एक छोटा सा मैं यहाँ पे लूंगा. रूट वैल्यू है 7n और उसकी 2 चिल्ड्रन की वैल्यू है t of n by 2 और यहाँ पर आप लोगे t of 2n by 5. Then using substitution method you have to find the value of t of n by 2, t of 2n by 5 और यहाँ पर आप इसका sum लेंगे. Right? You get some value here x1, you get some value x2 here, you get some value xk to depth k. Then the total time complexity will be nothing but sigma xi. I is equal to starting from 1 up to some k. इस तरीके से you have to follow this. So if you work out this way, the time complexity of this will come out to be theta of n. So इसका answer is theta of n. If you work out in this fashion, right? You can do that. That will be slightly laborious, लेकिन आप करोगे तो इस तरीके से वर्कआउट होगा. इससे ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आपने रिकर्शन ट्री अप्रोच फॉलो ना किया हो तो प्लीज रीड दैट रिकर्शन ट्री, गेट योरसेल्फ well familiarized from Corman textbook, and then you work out. You will get the answer as theta of n, not n log n. n log n जब होगा जब if the recurrence of this form t of n is equal to t of alpha n plus t of 1 minus alpha into n plus f of n, which is generally order of n, इसका होगा आंसर n log n. ये हमेशा याद रखिए आप. तो जनरली पीपल कंफ्यूज होते हैं. यहाँ पर this alpha is 1 by 2, this is not 1 by 2. This is alpha, this is not 1 minus alpha. Therefore, if it is 1 minus alpha, then n log n आएगा आंसर. यहाँ पर अलग अलग है साइजेस ऑफ द प्रॉब्लम. ये n by 2 है, 2 by 5 of n है. दोनों के साइजेस अलग अलग है. t of alpha n plus t of beta n. Beta and alpha have no relation. उसके लिए आपको इस तरीके से समेशन करना है to get the value.
ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई एम वेरी श्योर एवरीबडी विल वर्क आउट। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्वैप्स, नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड टू सॉर्ट एन एलिमेंट्स यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ स्वैप्स इज नेवर मोर देन डैश। कम ऑन, नंबर ऑफ स्वैप्स जो होंगे सिलेक्शन सॉर्ट में विल नेवर बी मोर देन n। उसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वर्स्ट केस नंबर ऑफ स्वैप्स फॉर सिलेक्शन सॉर्ट इज ऑलवेज ऑर्डर ऑफ n। लेकिन दूसरे सॉर्टिंग एल्गोरिथम के इज मोर देन n। सिलेक्शन सॉर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमेशा आपको कई बार गेट में आई है, आपको रिमेंबर करना है। तो देयरफॉर दिस ऑर्डर ऑफ n और थीटा ऑफ n वेरी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, बताइए। The worst case running time to search for an element in a balanced binary search tree with n into 2 power n elements। balanced binary search tree, यहां पर देखिए आप, एम्फोसाइज कर रहा हूं मैं, बैलेंस्ड है ट्री। इट इज नॉट गिवन जस्ट बाइनरी सर्च ट्री, बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री लाइक AVL ट्रीज। तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यहां पर, या यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर n into 2 power n। फॉर n एलिमेंट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बैलेंस्ड ट्री विल बी फॉर सर्चिंग log n for n elements, log n। come on, अब इसका आंसर बताइए मुझे क्या होगा। what will be the answer for this? the number of elements are n into 2 power n, मतलब the time complexity will become log of n into 2 power n। log ab is log a plus log b, so therefore this will become log n plus log of 2 power n। so log of 2 power n will become, this is log n plus n। So this become my time. If you take the order is order of n, so therefore answer is C। ठीक है, इस तरीके से करना है। चलिए और आगे बढ़ेंगे। आंसर मी, यहां पर जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। रीड द क्वेश्चन एंड टेल मी द रेस्पॉन्स। tightest upper bound that represent the time complexity of inserting an object into a binary search tree। अब देखिए बच्चों, यहां पर ये नहीं कह रहा है बैलेंस्ड, यहां पर बता रहा है बाइनरी सर्च ट्री। तो यहां पर आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। तो इन द वर्स्ट केस द बाइनरी सर्च ट्री कैन बी स्क्यूड ट्री लाइक दिस, इन द वर्स्ट केस। तो उसके लिए आप इंसर्शन टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ n। So that's why the answer for this is order of n। हाँ, अगर बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री पिछले तरह देता तो हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ log n। तो यहां पर जनरली बच्चे कंफ्यूज वही होते हैं log n और n में। वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n व्हेन द ट्री इज अ स्क्यूड ट्री, और यहां पर वही पूछ रहा है। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, चलिए इसका भी बता दीजिए आंसर। दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई वुड से दिस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन फॉर हीप सॉर्ट। Number of elements that can be sorted in theta of log n time, order of log n time using heap sort is dash। Prajwal is saying C, Ankit Singh is saying 1। What about Shifu Khadir? Movie is saying 1। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Come on, Mohammad Asif A। Papan Ghosh is saying 1। What about Chanchal Neha Mishra? Chanchal and Neha Mishra? Chanchal is saying C। Okay, very good। A and D and C, people have said A and D and C। ठीक है, थोड़ा यहां पर हम एफर्ट डाल के वर्क करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा मैं, प्लीज ऑब्जर्व। टू सॉर्ट एन एलिमेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हीप सॉर्ट इज n log n। राइट, n एलिमेंट्स अगर आपको सॉर्ट करना है तो टाइम लगेगा n log n। और क्वेश्चन में ये बता रहा है आपका टाइम होना चाहिए सिर्फ log n, सिर्फ log n। तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होना चाहिए। तो आप यहां पे मल्टीप्लाई नहीं करके 1 बोल लेंगे आप, राइट। एक लॉजिकल अंडरस्टैंड कीजिए, अगर n एलिमेंट्स है तो n log n है। अगर log n टाइम चाहिए आपका तो नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी डेफिनेटली लेस देन, नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी लेस देन n।
लेकिन दोज हु सेड 1, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप n की वैल्यू 1 लोगे तो log n की यहां पर भी आपको 1 सब्स्टिट्यूट करना है। अगर n की वैल्यू 1 है तो आप ये सिर्फ यहां पर 1 सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, यहां पर भी 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे आप। 1 का मतलब कांस्टेंट, राइट? तो टाइम 0 हो जाएगा आपका, log n नहीं होगा। कांस्टेंट अगर लेंगे आप तो टाइम भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो 1, दैट इज ऑप्शन ए, इज रॉन्ग। थीटा ऑफ 1 इज रॉन्ग। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंड पॉइंट यू अंडरस्टैंड, देखिए आप, अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है n log n। अगर मान लीजिए आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स log n है तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? log n इंटू, सो log n इंटू log ऑफ log n, इतना टाइम होगा आपका, ठीक है? log n अगर एलिमेंट्स है तो हीप सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होगी, मतलब वो log n से भी बढ़ के है, log n से भी बढ़ के है, और हमें चाहिए सिर्फ log n टाइम। तो मतलब ये हुआ कि टाइम शुड इवन बी लेस देन log n, टाइम शुड इवन बी लेस देन log n, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट शुड इवन बी लेस देन log n। जब हमें टाइम चाहिए log n तो नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी इवन लेस देन log n। अब दो ऑप्शंस है लेस देन log n, यहां पर आप देखिए, एक है रूट ऑफ log n और दूसरा है log n बाई log n। अगर आप रूट log n लोगे ना तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी रूट log n इंटू log ऑफ रूट log n, ठीक है? रूट log n इंटू log ऑफ रूट log n, तो ये हो जाएगा log n पावर हाफ, log n पावर हाफ इंटू log ऑफ log n, बिकॉज हाफ बाहर आ जाएगा, ये टाइम होगा आपका। इसका ऑर्डर लेंगे तो आप ये ऑर्डर होगा। तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑर्डर ऑफ log n, इट मे बी स्लाइटली लेस, इट इज नॉट log n। तो वी वांट एग्जैक्टली log n। तो बच गया कौन सा ऑप्शन? आपका बचा ऑप्शन ये है जो विच इज लेस देन log n। तो log n बाई log n। लेकिन आप प्रूफ कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगा यहां पर। देखिए आप, इफ योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन एज log n बाई log ऑफ log n, टाइम आपकी बन जाएगा log n बाई log n, राइट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स into log of log n by log n। अगर आप log a by b का फॉर्मूला एक्सपैंड करोगे तो दिस इज नथिंग बट log n by log n into, ये एक्सपैंड कीजिए, log n माइनस log n, ऐसे होगा। अब जब आप इसको ओपन अप करोगे, सो दिस टर्म एंड दिस टर्म विल गेट कैंसल, द फर्स्ट टर्म विल बिकम ओनली log n माइनस दिस विल बिकम लाइक log n बाई log n into log n। Definitely by putting some values for n you can prove that this second term is less than log n, this second term is less than log n। So if you take the order of this will become order of log n। तो मतलब ये है, if the number of elements are log n by log n, time complexity is proved to be order of log n, time complexity is proved to be order of log n। So that's the approach of solving that question। So therefore the correct answer for that question is C। चलिए इसका भी आंसर जल्दी बता दीजिए मुझे। अभी हमने देखा था सेम वेरिएशन, नंबर ऑफ स्वैप्स हमने अभी पूछा, नंबर ऑफ स्वैप्स इज ऑर्डर ऑफ n, so therefore the correct answer is B, not D। Some people are saying D। Number of swaps for selection sort, order of B, order of n। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी एक स्लाइट ट्विस्ट है क्वेश्चन में, प्लीज बी केयरफुल। यहां पर भी जनरली बच्चे, द स्टूडेंट्स विल मेक अ मिस्टेक। Come on, boys and girls, please tell me what is the answer for this question। A, correct। Suppose you implement quicksort by always choosing the central element। Don't think that central element is the element which is going to get pivoted in the middle, no। Central element can get pivoted at the first place or last place, right?
central element can get placed at either first place or last place. So don't think that central element means it get pivoted in the middle, no. So therefore, in the worst case, it can become order of n square. The same recurrence as the worst case behavior. So don't think that central element means it will get pivoted in the middle. Central element of the list, unsorted list, can get pivoted at the first place or the last place. So therefore, the time complexity in the worst case can be order of n square. हाँ, best case में अगर आप पूछते तो शायद जब हम बोलेंगे order of n log n, क्योंकि यहाँ पर worst case की बात हो रही है, तो इसलिए जरूर बस जरूर order of n square होगा. चलिए next. ये भी बहुत simple question है. What will be the response for this question? Quick sort. Yes. What is the answer for this? This is sorted list. This is unsorted. Sorted list के लिए time ज़्यादा होगा T1. This is time T2. So naturally T1 is greater than T2. So option is C. Very correct. चलिए जल्दी आगे बढ़ेंगे. Yes. What is the answer? This is also an interesting question. Yes. What is the answer for this? Yes. So what will be the answer for this? Answer is theta of 1. How? Pick any three elements of the list. First three, last three, middle three, any three elements of the list, and make comparisons to find out an element which is neither the largest and smallest among them. With constant number of comparisons you can do it. So therefore the time complexity of this is theta of 1. It is not order of n. It is not order of n. Theta of n. Theta of 1. So correct answer is D. How? Pick any randomly three elements, any three elements of the list. And then you can find the element which is not largest among the three, not smallest among the three, with constant number of comparisons. You can do that. So therefore the answer is D. This is also a simple question, recent paper 2015. Quick sort ka worst case time complexity relation is given by this, is it not? This is the worst case. Yes, that's correct. Answer for this question, B. B है. Worst case complexity, T of n minus 1 plus order of n plus constant time. So that is the worst case behavior. ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए मुझे. Worst case complexities of insertion and deletion in a binary search tree. Worst case, binary search tree, be careful. यहाँ पर generally again people get confused. Again, because I am not saying binary search tree is a balanced tree, so I have to take in the worst case like a skewed tree, जिसके लिए आपको जरूर टाइम लगेगा worst case में order of n for both. So the answer, as you said, many people, answer B is correct, very correct, yes. हाँ, ये एक simple important question है, जहाँ पर generally people are bound to make mistakes, so I would like to solve this. But before that, I will give you 1 minute of time or 2 minutes of time. Please work out this and tell me the answer. First sort का एक important question है, numerical question. So what is the answer for this? यहाँ पर भी generally students are bound to make mistake. कैसे solve करोगे? Y12 is correct, but what is the approach? Yes. The time complexity of merge sort for sorting in elements is n log n. ये तो पता है आपको. Now, it is given that it takes 30 seconds for an input size of 64. Means if there are 64 elements,
द टाइम टेकन इज 30 सेकेंड्स, मतलब ये 30 सेकेंड जो है दिस इज ऑन सम मशीन, क्योंकि ये दिस इज अपोस्टीरियरी टाइम, दिस इज ए प्रियोरी। इसका ए प्रियोरी टाइम क्या होगा? ए प्रियोरी टाइम होगा n इंटू लॉग एन। लॉग 64 की वैल्यू है 6, दिस यूनिट्स ए प्रियोरी टाइम। ये ए प्रियोरी टाइम है, ये अपोस्टीरियरी टाइम है, अपोस्टीरियरी, वी डिड इन क्लास, ठीक है। तो 30 seconds is equivalent to 6 into 64 units. तो 1 second का टाइम कितना होगा? और 1 unit asymptotic, sorry, we have 66 minutes of time, right? So 1 second के लिए generic कितना units होगा? So that will be nothing but 6 into 64 divided by 30 units होगा 1 second के लिए, right? For one second, time taken in a priori units is this. 6 minutes मतलब 360 seconds. 360 seconds के लिए a priori unit, जिसमें आप n एलिमेंट सॉर्ट कर सकते हैं 6 minutes में n एलिमेंट्स. So that 360 seconds, right? 360 seconds for sorting n elements will take a priori how much time, right? So this you have to multiply. So this will become how much? How many units? 360 seconds correspond to how many units? So this will become 360 into 6 into 64 divided by 60 divided by 30. It will become like this. So this will be number of units to sort n elements. लेकिन n elements sort करने के लिए आपका time होगा n log n. So that means this you equate it to n log n. So if you use factorization method and try to find the value of n from this equation, right? Try to find the value of n from this equation, you will get 512. Because ये value होगी 4608 equated to n log n, you can get the answer 512. So this is the approach of solving this question. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. ये बहुत simple है, I will leave it. This is also simple question. But फिर भी आप एक बार solve कर लीजिए question. Algorithm considered here sorts the input sequence in ascending order. If the input is already in order, look at this. If the input is already in ascending order, which of the following are true? Which of the following are true? Come on. If the input is already in sorted order. Yes. Quick sort runs in theta of n square time, correct? Because input is already in sorted order. Bubble sort runs in theta of n square, right? Is it true? The elements are in already sorted order. Bubble sort may run in order of n square. Is it true? No. Merge sort runs in theta of n time. No, the merge sort never takes theta of n time. Insertion sort in best case will take order of n time when the input is already in sorted order, right? So therefore the correct option is basically 1 and 4, that is option D. इसका भी एक आंसर जल्दी बता दीजिए. क्विक सॉर्ट का है, रिसेंट क्वेश्चन, गेट 2019. An array of 25 is NAT question. It is NAT. Yes. The probability, this is based on the probability. The probability that the pivot element gets pivoted in the worst possible. Worst possible कब होगा? जब या तो एलिमेंट पाइवोट होगा फर्स्ट पोजीशन पर या लास्ट पोजीशन पर, राइट? सो 1/25 प्लस 1/25, 2 पोजीशन. सो देयरफॉर 2/25, 0.08. वेरी सिंपल, 0.08. चलिए आगे बढ़ेंगे. ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है. फिर भी एक बार वर्कआउट कीजिए, बिकॉज रिसेंट टाइम है 2021. यू कैन टेल मी द आंसर. कम ऑन. List is sorted. List is sorted. Which of the sorting method will take the least number of comparisons? यहां पर सिर्फ comparisons की बात हो रही है. Least comparisons among the array elements to sort the above array in ascending order. कौन सा algorithm will take least? Quick sort, right? For sorted order, maximum time n square. Selection sort, order of n square. Merge sort, order of n log n. When the list is already sorted, insertion sort. So therefore the correct answer is insertion sort. Very correct. Many people have told correctly. ये आप workout कीजिए, that is very simple. अब हम quickly, because we are running short of time, थोड़े questions हम लेंगे greedy method के.
ग्रीडी मेथड पे आ जाइए. रीड दिस डेटा, दिस आर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन knapsack. We are given 4 items, their weights are here, values in rupees, मतलब ये प्रॉफिट है. Some information given. ठीक है. अब क्वेश्चन देख लीजिए यहां पर नेक्स्ट पेज पे. The task is to pick a subset of these items such that their total weight is not more than 11 kg knapsack capacity and their total value profit is maximized. No item may be split. ये देख लीजिए आप. The total value of item picked up by an optimal algorithm. Some optimal algorithm is denoted by VOPT. The greedy algorithm sort the item by their value to weight, profit by weight ratios in decreasing order and picks them greedily, starting from the first item in the ordered list. The total value of item picked up by greedy is denoted by V greedy. The value of VOP minus V greedy is dash. Not 0 on knapsack. This is not 0 on knapsack, please. Weight of the bag is 11 kgs. एक ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी है जिससे आपका प्रॉफिट आएगा, वी ऑप बोलेंगे हम. और ग्रीडी मेथड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ओनली नॉन ब्रेकिंग ऑब्जेक्ट्स, वी आर by applying profit by weight ratio, we should get the answer. So therefore I think some people have already told the answer. Yes. So if you look at the data, based on this data you can see the knapsack capacity is 11 kgs. तो अब ये डेटा के बेसिस पर हम स्ट्रेट अवे बोलेंगे वी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी. देखिए, अगर आप ये 3 ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते. अगर ये 2 ऑब्जेक्ट डालेंगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा इतना, ये 2 डालेंगे तो प्रॉफिट बनेगा इतना, या ये डालेंगे तो प्रॉफिट बनेगा इतना. लेकिन अगर सिर्फ ये एक ऑब्जेक्ट डालेंगे तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा 60. आपका बन जाएगा 60, मतलब वी ऑप की वैल्यू बन गई 60. अब हमें वैल्यू डिटरमिन करना है वी ग्रीडी, प्रॉफिट विद ग्रीडी अप्रोच. उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्रॉफिट बाय वेट रेशियोज निकालना होगा. P1 by W1 कितना है भाई? P1 by W1, P1 प्रॉफिट बाय W1 60 by 10 6 है. P2 by W2 28 by 7 4 है. P3 by W3 20 by 4 5 है. P4 by W4 ये है 24 by 2 12 है. 12 है. तो मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे पहले जाएगा? जिसका प्रॉफिट बाय वेट रेशियो हाई है वो पहले जाएगा, मतलब 4th ऑब्जेक्ट पहले जाएगा. तो दैट मींस आई एम गोइंग टू गेट प्रॉफिट ऑफ 24 डेफिनेटली. इसका वेट है 2. उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट प्रॉफिट ये हो गया. नेक्स्ट हाईएस्ट प्रॉफिट ऑब्जेक्ट है फर्स्ट ऑब्जेक्ट. लेकिन फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेट है 10 यूनिट्स. ऑलरेडी 2 यूनिट्स हम डाल चुके हैं knapsack में, 10 यूनिट्स हम नहीं डाल सकते, देयरफॉर दिस कैन नॉट बी डन. उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट प्रॉफिट ऑब्जेक्ट है थर्ड ऑब्जेक्ट है ये 4 plus 2 I can put. So therefore the value of the profit will be 20. So 24 plus 20. Total weight in the knapsack is 6. आप second object include नहीं कर सकते. So this is the profit that I am going to get with greedy approach, मतलब 44. So therefore the VOP minus V greedy 60 minus 44 is equal to 16. 60 minus 44 is equal to 16. That is the answer. Anjali Sahu, you are asking one doubt. What is the doubt, please? So therefore the answer for this NAT question is 16. Simple question. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और थोड़े कुछ कर लेंगे. ग्रीडी में भी स्प्लिट नहीं करना है. देखिए, ग्रीडी में स्प्लिट नहीं करना है बाय डिफॉल्ट, लेकिन इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली उसने एम्फसाइज किया है, इसीलिए हमने स्प्लिट नहीं कर रहे हैं. ग्रीडी में आप स्प्लिट करना है एक्चुअली, लेकिन इस क्वेश्चन में बोला है स्पेसिफिकली, दैट्स व्हाई वी आर नॉट स्प्लिटिंग. समझ गए बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपने सही बात उठाई, राइट. लेकिन यहां पर दिया गया है पर्टिकुलरली क्वेश्चन में कि आप स्प्लिट नहीं करोगे. ठीक है, ओके. इसका आंसर बता दीजिए मुझे जल्दी. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई हैव टेकन, वी वुड लाइक टू वर्क आउट. अदरवाइज इफ इट इज नॉट गिवन देन यू हैव टू स्प्लिट. अंजलि, अगर वो स्टेटमेंट नहीं दिया जाता क्वेश्चन में कि आप स्प्लिट नहीं करना है, तो आप जरूर स्प्लिट करोगे. यू विल अप्लाई फ्रैक्शनल knapsack. यस, करेक्ट. चलिए जल्दी इसका आंसर बताइए मुझे. सबसे पहले ये बताइए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई करोगे? ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कौन सा एल्गोरिथम? क्योंकि मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स दे गो रॉन्ग व्हाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. सो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू सॉल्व दिस.
कौन सा algorithm? Yes, optimal what? Ankit Singh, optimal what? What is the name of the problem? कौन सा problem आप? Yes, very correct, very correct. You need to apply optimal merge pattern. चलिए जल्दी अप्लाई कीजिए और आंसर बोलिए. न्यू नैट है क्वेश्चन, नैट. ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न. न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, नॉट एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल आंसर टाइप. एग्जैक्ट आंसर चाहिए मुझे. 358. ओके. मतलब you have to apply merge operation. Two smallest values 20 and 24 are going to be merged. Look at this. 20 and 24 are going to be merged first to get the root with value of how much? 44. लेकिन दोनों को मर्ज करने के लिए जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस लगेंगे वो होंगे 43. ये बात समझनी है आपको, क्योंकि नंबर ऑफ कंपैरिजंस हमने क्रैश कोर्स में भी देखा था. टू मर्ज टू लिस्ट हैविंग n and m elements is n plus m minus 1. नंबर ऑफ कंपैरिजंस इन द वर्स्ट केस n plus m minus 1. वो फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पर. दिस इज n, दिस इज m, सो 43 नंबर ऑफ कंपैरिजंस. ये हो गया हमारा आंसर फॉर फर्स्ट मर्ज. चलिए अब लिस्ट में क्या हो गया आपके? 20 24 हमने मर्ज की. अब बचे लिस्ट 30 35. ये दोनों स्मॉलेस्ट है. इन दोनों को हम मर्ज करेंगे, 30 एंड 35 को. 30 एंड 35 को मर्ज करेंगे टू गेट अ लिस्ट विथ 65 एलिमेंट्स. यहां पर नंबर ऑफ कंपैरिजंस आपके बनेंगे 64. ये आपको लिखना है जरूरी, क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ कंपैरिजंस ही पूछा है. ठीक है. अब आपके एलिमेंट्स हो गए, क्या हो गए देखिए. 20 24 कंज्यूम हो गए, 30 35 कंज्यूम हो गए. अब है 50, राइट. 50 44 एंड 65. मतलब 50 को आप मर्ज करोगे 45 से, सॉरी 44 से. 50 को मर्ज करोगे आप 44 से 50 को. तो इन दोनों को मर्ज करने से आपकी लिस्ट की वैल्यू बन जाएगी 94 और इसके नंबर ऑफ कंपैरिजंस होंगे 93. अब लास्ट में ये दोनों को मर्ज करेंगे आप. ठीक है. ये दोनों को मर्ज करेंगे टू गेट अ वैल्यू ऑफ हाउ मच? 90 plus 60 is 150, 159. तो इसके नंबर ऑफ कंपैरिजन बन जाएंगे 158. तो ये पूरे वैल्यू जब ऐड करोगे आप 158, 93, 43 plus 64, दिस विल कम आउट टू 358. ये है आपका आंसर. 2 मार्क क्वेश्चन था, दैट इज वाई दिस इज द ट्री. करेक्ट, दिस इज द ट्री. 358. इसी बेसिस पर और भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस है ऑन ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न, ऑन हफमन कोडिंग. थोड़े बहुत क्वेश्चन लेंगे. चलिए ये पहले कर लेंगे. These are interesting question asked recently. Get 2021 का क्वेश्चन है. प्लीज वर्कआउट एंड टेल. Jyoti Krishnan, the problem is this is English batch, English. Otherwise, I would also love to speak in, like to speak in English because I have much more fluency and the flow will be better in English. But the problem is I am told by the team, by the company to take this batch in English mode. HI, English means Hindi plus English. Otherwise, if everybody is convenient with English, I will go totally with English. No problem for me. Whatever is convenient for the batch. I would like to basically, I would be more convenient if I speak in English only. But that is a problem. That's why I'm discussing both in English as well as Hindi. Okay. Statement of last greedy question. देखिए आप यहां पर लास्ट एक बार देख लीजिए क्वेश्चन. Those who wanted to see. देखिए अभी आप कमेंट में आया हिंदी भी पूछ रहे हैं. रियलिटी सर्च इज सेइंग हिंदी. That time we will use Hindi also. There is no worry. Don't worry. We'll follow in English. चलिए जल्दी मुझे इसका बता दीजिए प्लीज. Come on, we are almost 2 hours completed. Another 45 minutes I have to work out. This question. Come on. Sahu, Anjali Sahu, I have told you just now. I've shown you the question. Otherwise, in the PDF, you can have it later, right? Now you work out this problem. It's an interesting problem to work out. All of you, please work out. This is interesting. If you have not done earlier. This is an interesting question. Please work out. Okay. Don't worry. I will try to repeat important statements if I say in Hindi
I will also try to repeat Jyoti Krishnan. I will also try to repeat in English, don't worry. So the answer for this is 23, absolutely correct. Yeah, how are we going to do it? कैसे करेंगे हम? The approach is Huffman coding, right? The optimal merge pattern. So the frequencies हम ले लेंगे, we'll try to get the frequency of A. If frequency of A is 1, the frequency of B is 2, right? The frequency of C is equal to 2. The frequency of D, number of carat times it is occurring, 2. And the frequency of E is equal to 3. So based on this, we are going to construct same Huffman coding, right? We are going to construct the merge tree, optimal merge tree. So we are going to merge first A with B. This is A, this is B. We are going to merge these two to get a value of 2. Sorry, value of 3. AB 1 plus 2, 3. Then I have 2 and 2, C and D are merged. 2 and 2, so therefore this become 4, right? So I will have basically like A, B, C, D are merged, I have 3. So this 3 and 3 are merged. I'm not drawing the tree, hope you can draw it. Just tell me from, write down on board and tell me what is the number of, what is the length of code A. I just want the length. What is the length of code A? A ke liye how many bits are there? How many bits you got? How many bits you got for A after getting the tree? I'm unable to draw the tree, I don't have 3. Okay. B is having how many bits? B is having how many bits? Come on. B is having how many bits? Write in one statement the length of A, B, C, D. What is the length of A, B, C, D? Length of the codes A, B, C, D, E. Please write down. Please write down in one statement, all of you, for those who have worked out, and tell me the answer. 3, 2, 2, 3, 2. 3, A is, B is how much? 2. C is 2. D is 3. And E is 2. Is it like this? Is it correct? Is this okay? Based on what Chanchal has told, I have written here. A is 3, B is 2, C is 2, D is 3, and E is 2. Is it correct? Length of the frequencies? Length of the codes? Ritam Sven is telling different. Okay, 3, 3, 2, 2 you are saying. 3, 3, 2, 2. 3, 3, 2, 2, 2. Okay, we'll go like this. Then based on that you can tell what is the overall length of this. So A is how many? A is 3 plus. B is how much? B is 3 plus. B is again 3. C is 2 plus 2 plus. D is 2 times, so 2 plus 2. And E is 3 times, 3 into 2. So if you add up that, you will get 23. That's all, that's the question. That's the question. इसी बेसिस पर कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप प्लीज वर्कआउट. दिस आल्सो बेस्ड ऑन हफमन कोडिंग. प्लीज वर्कआउट सेपरेटली on same lines and you can check the answer. The answer for new NAT, this is 225. I hope you'll get that answer if you work out. उसी तरह there is one more. Let us work out this question. Let us work out this question. Come on, boys and girls, please read this question. It is interesting. Based on spanning tree. एक बार read कर लीजिए question. Read the question once. ओके चलिए क्वेश्चन बता दूंगा मैं आपको. What will be the cost of minimum spanning tree of such a graph with n nodes? Some options are there. जनरली अगर आप हिट एंड ट्रायल पे जाओगे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर. मैं आपको वही बता रहा हूं. डोंट ट्राई टू वर्क आउट सच क्वेश्चंस ऑन हिट एंड ट्रायल और अप्लाइंग ऑप्शंस. यू विल गो रॉन्ग. यू विल गो रॉन्ग. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू मे गो रॉन्ग. अब क्वेश्चन ये है कि आप इसे डिराइव कैसा करोगे. हाउ यू डिराइव दिस? For sample graph V1, V2, V3, V4, this is V1, this is V2, this is V3, this is V4. मैं यहां पर प्रोसीजर बता रहा हूं स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने के लिए. प्लीज ऑब्जर्व.
If I take first a graph with 3 vertices, please observe. Graph with 3 vertices, this is vertex 1, vertex 2, vertex 3. It is a complete graph. क्यों? देखिए आप, condition for having an edge is this. Vi and Vj are connected if and only if 0 is less than I minus j is less than or equal to 2. So therefore, 1 and 2 if you take less than or equal to 2, 1 and 3 less than or equal to 2 and 3, 1 less than or equal to 2. So therefore, this is the spanning tree. The edge of this cost is 3, the edge of this cost is I plus j 4, this is 5. तो इसकी जो स्पैनिंग ट्री होगी 3 and 4 होगी और उसका कॉस्ट होगा 3 plus 4, राइट? अगर आप 4 वर्टेक्स ग्राफ इस तरीके की होगी आपकी 4 वर्टेक्स ग्राफ, देखिए देयर इज एन एज फ्रॉम 3 to 4, देयर कैन नॉट बी एन एज फ्रॉम 4 to 1, 1 to 4 का डिफरेंस है 3, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2. तो और ये पूरे बाकी के बराबर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. ये 4 वर्टेक्स के लिए अगर आप स्पैनिंग ट्री कंसीडर करोगे, दिस विल बिकम 3, 4, 5 cannot be added, you have to add 6. So therefore spanning tree will be this edge. This will be the spanning tree. So cost of that spanning tree with n is equal to 4 vertices will be 3 plus 4 plus 6. देखिए आप, with n is equal to 3 vertices, cost of spanning tree is 3 plus 4. With 4 vertices, the cost of spanning tree is 3 plus 4 plus 6. हाँ, अगर n is equal to 5 vertices, 5 vertices होंगे, तो इस बेसिस पर आप बोलेंगे तो cost of spanning tree कितना होगा? 3 plus 4 plus 6 plus 7 अगर आप ऐड करोगे, then it will lead to a cycle. तो हम ऐड करेंगे 8. देखिए आप, 3 plus 4 plus 6 plus 8 इस तरीके से होगा. तो मतलब ये हुआ, I can write this as 3 is a odd factor 3, लेकिन यहां पर I can take 2 outside, 2 plus 3 plus 4. यहां पर हम लिखेंगे 3 plus 2 into 2 plus 3. यहां पर हम लिखेंगे 3 plus 2 into 2. देखिए आप, 2 plus 3 for n equal to 4, 2 plus 3 plus 4 for n is equal to 5. मतलब ये हुआ, if I have n vertices, look at this derivation, interesting. If I have n vertices, spanning tree का cost will become 3 plus 2 into 2 plus 3 plus 4 plus so on plus n minus 1. This will become my formula. एक बार चेक कर लीजिए. Check it once. This will become my formula. This will become my formula. ठीक है? Simplify it. 3 plus 2 into, this is nothing but sum to n minus 1 terms. N into n minus 1 divided by 2 minus 1 because first term is missing. So if you open it, it will become 3 plus 2 into n square minus n minus 2 divided by 2. So directly this will become n square minus n plus 1. This is a derivation I made, and I would appreciate if you make a derivation like this rather than solving ad hocly. Up now you can see the options. It is directly matching with this option. This is the approach of solving the problem. You should solve the problems in this way for spanning trees. Okay? Cost of the spanning tree. Yes, that's it. I have written the formula here. Please observe. Sum of n minus 1 terms is n into n minus 1 by 2. N into n minus 1 by 2. Because 1 is missing, I am subtracting minus 1. Please observe. Anjali Shahu. Got it? Have you checked the formula? It is correct. Okay? ठीक है. चलिए आगे बढ़ेंगे. We'll see some more interesting questions. ये आप कर सकते हो, I am very sure. ये क्वेश्चन ले लेंगे. Come on. ये थोड़ा confusing question है. I would like to discuss this. ये 2012 2 marks. Read it. What is the answer for this? Come on. Chanchal Sahu, Shifu Qadir, Tapan Ghosh, Pritam Swain, Prashant Prabhakar. I am able to remember your names. Tell me the answer for this.
It's an interesting question. B. Many people are saying B, okay. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपको कन्वे करना है बाय मींस ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि पहले आप सब लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर हम विल डिस्कस अबाउट एन इंपॉर्टेंट इशू ऑफ दिस क्वेश्चन. टेक्निकल वियान इज सेइंग ए, ठीक है. तो ऑप्शन इज फ्लक्चुएटिंग बिटवीन ए एंड बी. चलिए स्टार्ट करेंगे. पहले हम क्या करेंगे, केस स्टडी के लिए ग्राफ ले लेंगे. वील टेक वन ग्राफ, sample graph with 3 vertices to be a simple thing. So let's call it as vertex A, vertex B, vertex C with some cost values 3, 4, 5. You know the spanning tree of this graph will be definitely like this: A, B, C with values 3 and 4. This is my spanning tree. We are calling by notation this as T. Now when you square the vertices values, when you square the edge values, my graph, this is graph G. Now what will the graph G dash will become? G dash is this. Is vertex A, vertex B, vertex C, right? So this will become 9, 16, 25. And the spanning tree of this will become A, B, C, right? With values 9 and 16. So the cost of this spanning tree we are saying as small t is equal to 7, right? And the cost of this spanning tree we are calling it as T dash is equal to 25. 25. This scenario. So now if you observe the structure of the spanning tree T and this is T dash, this T dash, they are same. T and T dash are same perfectly always. So therefore this option is gone. Either it has to be A or B. But for that you can test T dash, I mean here you say T dash 25 is less than T square. Absolutely correct. T dash 25 is less than T square 49. This is true. So therefore this is holding true. If you take graph with 4 vertices, 5 vertices, always this will be true. So people would be inclined to say that the correct option is B, as some people have said. Like in what is the problem here? Can anybody tell a special graph for which option B would become false? Can you tell one special graph for which the option B will become false? When? Come on, anybody. When will option B will become false? Come on. Edge weights cannot be 1. Edge weights are greater than 1. Same edges bhi aap leke check kar lijiye, nothing will happen. Not null graph. Graph with only one edge, 2 vertices and 1 edge. Please observe A and B. Cost value 2. This itself is spanning tree. If you square it, it become 4. Agar ye 3 hai, this become 9, right? So a graph with only 2 vertices and 1 edge, then what will happen? T dash will become equal to T square. This also will be true. This also will be true, and that is the reason why, boys and girls, I would like to tell you that for 2012 when this question was asked, because this ambiguity arised, both these choices were correct, and this was not an MSQ question, this is an MCQ question. So that is why the GATE committee has given, you cannot say D, none of the above you cannot say, because these two are correct. If somebody select A, marks should have been given, somebody select B, marks should have been given. Ambiguity is called ambiguous question. So that is why in 2012 when this question was asked, marks was awarded to all. हाँ, अगर ये MSQ question होता तो then I would have selected A as well have selected B. या फिर इसको अगर आप combine कर देते तो शायद for example if the option would have been given like T dash would be less than or equal to T square, then that would have been correct answer. That would have been correct answer. Not D also. Suppose if I say MSQ question, then I would select A and B. I won't say D, A and B. I hope you got my point. So what I am trying to say, whenever such ambiguous questions are there, please do attempt the answer, because sometime you will get answer marks for that. That is what I am trying to say. So therefore, that is the policy of ambiguous questions. चलिए ये भी एक question ले लेंगे. This is also an interesting question.
What will be the answer for this? Let me see how many of you will give the correct answer for this. Come on, come on. Prashant Prabhakar, Anjali Sahu, Shifu Qadir, please work out. Chanchal, work out this. यहाँ पर this is what they are saying is, for this graph, the edges which are marked with weight values, this is spanning tree. Yes, spanning tree here. There are 6 vertices, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So I need 5 edges. 1, 2, 3, 4, 5. So spanning tree, the edges that are making spanning tree is already given, but the edge values of which are not marked are not given. He's saying that distinct integer edge values, edge weights, all edges have distinct weight. All edges have distinct weight. The minimum possible sum of weights of all edges in this graph is dash. Very interesting question. This is based on one of the algorithms of spanning tree. Either you cannot use Prim's algorithm, you cannot use Kruskal's algorithm here. You have to use Dijkstra Kalaba algorithm. Dijkstra Kalaba algorithm for spanning tree. I don't know whether you studied that or not. If you know the Dijkstra Kalaba algorithm, you can solve this 2-mark question within 5 seconds. You know Dijkstra Kalaba algorithm, you can solve this question within 5 seconds. I am saying within 5 seconds, not more than that. What is Dijkstra's Kalaba algorithm? It says that whenever there is a cycle during the construction of spanning tree, remove the edge with the largest value of the edge or edge value. Remove that edge which is having the largest value. So then when we have a cycle here, so minimum value of this edge has to be 10. Then only I am discarding it. When I have a cycle here, right, I am discarding the largest edge, matlab the minimum value of this edge value should be 7. And when I have a cycle here, if I have to discard this edge, the largest value of this edge has to be 16. So therefore I get the answer. Sum them up. Sum up all. Answer is 69. Because the edges are having distinct cost. The edges are having distinct cost. Distinct value. I slightly change the question here. If I say that if I remove the word distinct from here, may I know what will be the answer for this? If I remove the word distinct from here, what will be the answer? If I remove the word distinct, then naturally it will be 66, because this also has to be taken as 9, this can be taken as 15, this can be taken as 6. So therefore I have to subtract this, so it will become 66. Correct. So questions like this are also important. चलिए और कुछ typical question है तो देखेंगे, otherwise we'll go to next strategy. And now this is a simple question. ठीक है, एक बार वर्क कर लीजिए. एक क्वेश्चन ऐसे वर्क करेंगे, remaining I will leave it for you. Yes. Tell me the answer for this. Distinct positive weight edge. Distinct positive edge weights. If every wedge is increased by the same value, same constant value, then which of the following statements is or are true? Minimum spanning tree of G does not change. Shortest path between any pair of vertices does not change. What is the correct answer? You say both P and Q? Come on. Shifu Qadir is saying D, Sritam Swain is saying D, Rohit, everybody is saying D. Okay. Okay. We'll take a simple example. This is my graph, right? We'll take some edge cost. Like this first. Then what happens? So if I increase this by same constant value, same value, then suppose let us say we are incrementing by 100. So this will become 100 plus 3. This will become 100 plus 4. This will become 100 plus 5. Right? Take this. So now what happened? Now what happens?
The spanning tree of this will be 3 plus 4 here. The spanning tree here will be 103 plus 104. So spanning tree will not change. Will not change. Right? Ab yahan par now look for this graph. Like for example, the shortest path now is between this vertex and this vertex is having cost value 5. Now this is 3 plus 4, 7, this is 5. So therefore this is 105. Right? But now for example, if this is 105, this is 100 plus 3 and 100 plus 4. So therefore this is definitely more. So this itself is. So for this data set, shortest path is also not changing. Shortest path is also not changing for this graph. Lekin if I take a different edge cost values, I take another graph for example. Look at this graph. 1, 2 and 4. The shortest path between this vertex and this vertex is this 1 plus 2. This is 4. Right? This is 4. So what happens now when I increase the cost edge by same value 100, so this become 101, this become 102, this become 104. देखिए आप. Now spanning tree will remain the same. Shortest path earlier was this 1 plus 2. Shortest path now has changed 104. This is 101 plus 102. Shortest path has changed. Okay? Shortest path got changed. So shortest path will not remain changed is wrong. So this is wrong. So only P. So whenever there are some reasoning questions like this, I would advise you can take some sample data like that and prove it. That's it. Okay? So many people have gone wrong for this initially. Later they corrected. Very good. चलिए ऐसे थोड़े और क्वेश्चंस है आप वर्कआउट कर लीजिए. Then you can solve the problems. I will now go to dynamic programming directly. These are very direct problems. Okay. The remaining ones which I have left, you can work out. Now this is also a direct question on dynamic programming. What I just wanted to tell, I'm not going to work out. I just wanted to show you or tell you the important problems which have been asked in dynamic programming, right? So this is based on matrix chain product, MCP. It's a star question. LCS is another star question. Direct questions, numerical questions were asked. If you work out using the concept, yeah, last topic please, concept, which we applied in dynamic programming, the answer for this question will come out to be 19,000. You can do it as an exercise and try to practice. So in dynamic programming, I strongly recommend people should work out thoroughly on LCS and MCP. A variation of LCS is called longest monotonically increasing sequence. This is another variation of LCS, longest monotonically increasing sequence. Recurrence is given. Recurrence. He's not asking you numerical question. Recurrence for solving longest common monotonically increasing sequence. So when the recurrence is given, he's asking this particular problem will be solved with which strategy. That is nothing but dynamic programming. So this type of questions can also be asked. So the correct answer for this question is dynamic programming. Just like a variation of LCS. तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी problems है dynamic programming के, you get yourself thoroughly knowledgeable with regard to their recurrences, with regard to their approaches of solving and so on. Like one more question is there based on longest common subsequence. This is a question on LCS. I have already worked out a problem in two ways in crash course if you remember. So you can apply and solve this problem based on recursion tree approach or recursion tree, or you can even solve it based on tabular approach. Both approaches. You can try and get the answer for this. Okay? So that is not Tanjali, I mean, you have to remember, you have to understand, you cannot escape from the problems of LCS, matrix chain product and then other problems of dynamic programming. Right? I've already worked out in crash course. If you have not watched, please watch the video. You can get the answer how to solve this question. I have solved exactly similar this question. Correct. The answer for this is 34. Absolutely correct. Tabulation is better approach. Whichever approach you like. Recursion or tree. I have worked out both the approaches in crash batch. Those who have not watched, please watch the video and get the answer for this. On same lines you can do. Okay. It's a time consuming slightly. You can do that. चलिए quickly बता दीजिए मुझे. क्विकली मुझे बता दीजिए कि इसका आंसर क्या है, और ये बेसिस पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कन्वे करना चाह रहा हूं. फर्स्ट वर्कआउट दिस.
मैचिंग पेयर, Prim's algorithm for minimum spanning tree, definitely greedy method, so therefore this match with A. Floyd-Warshall's algorithm, dynamic programming, so B matches with this. Merge sort, naturally divide and conquer, so therefore C. Hamiltonian circuit, backtracking, D. ये है options. तो बच्चों, I just wanted to convey to you a very important point. ये आप मेरी advice को please remember कीजिए कि actually the topic of Hamiltonian circuit and backtracking, this is not explicitly mentioned in syllabus. ये syllabus में नहीं है. Backtracking is not there in syllabus. लेकिन क्वेश्चन आया है यहां पर, यही बात को आपको बताना चाह रहा हूं. इसलिए जब मैं एल्गोरिथम सब्जेक्ट पढ़ाता हूं इन रेगुलर बैचेस, not in crash, regular batches, I deal with this topic of backtracking and branch and bound. Backtracking and branch and bound, I deal with this topic. I give a brief introduction to that to make you understand what is backtracking process, right? And a couple of applications of backtracking like enquiry, Hamiltonian, graph coloring, and so on. Plus, I also tell you what is the difference between branch and bound. So in that regard, my sincere advice to you is that before you go for the exam, quickly, not going into detail, make yourself familiarized with what is backtracking and some applications of backtracking, ताकि if such questions are asked, you should not have any question. A couple of times questions were asked in earlier paper based on backtracking. Some problem. Just a second. Just a second. Got stuck. Okay. Right, it came back. We'll continue. बच्चों कोई किस्म का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एग्जाम के बारे में, राइट? यू वॉच मोटिवेशनल वीडियोस, डोंट गो इनटू कंपैरिजंस, डोंट गो इनटू एनी सॉर्ट ऑफ कंपैरिजंस ऑफ दिस, राइट? What brand is Max Hub. Anyway, it has come, no problem. So this is done. ये भी एक मैचिंग पेयर है, आप कर सकते हो. ये भी थोड़ा कर लेंगे immediately. Please observe. Given below are some algorithms and some algorithm design paradigms. Dijkstra, shortest path, Floyd-Warshall, binary search, backtracking. यहां पर देखिए आप फिर से backtracking आया है. Backtracking search on a graph. फोर अप्रोच है, फोर ऑप्शंस है, 5 ईयर मैचिंग पेयर है, लिस्ट में 5 है, मतलब ये 4 से एनी 4 यू हैव टू टेक. चलिए, बाइनरी सर्च ऑन ए सॉर्टेड अरे, ये होगा डिवाइड एंड कॉन्कर से. डायनामिक प्रोग्रामिंग से फ्लॉयड वार्शल्स लाइक अर्लियर ओकेशन, राइट? 3D डिजाइन से आप डाइकेस्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ सॉल्व कर लोगे. एक अब रही एक बात सिर्फ है बैकट्रैकिंग सर्च ऑन ए ग्राफ, जिसके लिए इंफॉर्मेशन है डेप्थ फर्स्ट सर्च या ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च. ये यहाँ पे कंफ्यूजन पॉइंट है, या आप डेप्थ फर्स्ट सर्च लोगे या ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च लोगे. अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे, देखिए आप 2015 का क्वेश्चन है, रिसेंट ही है, कोई पुराना क्वेश्चन नहीं है, तो मतलब अगर आपको
बैक ट्रैकिंग के बारे में आइडिया हो, प्रॉब्लम सॉल्व करने का अप्रोच पता हो, इफ यू नो इट, देन ओनली वी कैन वर्क आउट दिस क्वेश्चन. Backtracking basically uses depth first search. This point you have to remember. So therefore D is a correct option. D is a correct matching. So my sincere advice to you, what I told, again I'm trying to prove it by means of this problem. ठीक है, चलिए और आगे बढ़ेंगे. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, छोड़ेंगे. अब हम डायरेक्टली आ जाएंगे miscellaneous topics for some questions. A few questions I will show. This I'm sure you all can do it, but just for the purpose of completing the formality, some questions on heap and then some other topics I would like to show here so that you can work out. Jaldi देखिए आप, some questions were asked like this. A max heap is a heap where the value of each parent is greater than or equal to the value of its children. Which of the following is a max heap? Right? Which of the following is a max heap? तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है बताइए. Here every node is greater than, but what is the problem with option A? Can anybody tell me what is the problem with option A? Why option A? यहां पर भी देखिए 10 is greater than among all, 8 is greater, 6 is greater, right among all. Why this is not max heap? यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं. Why? Because this is not complete binary tree, whereas heap is a complete binary tree. That is the answer for it. This is a complete binary tree. That's why correct answer is B. ये भी एक पॉइंट आपको जहन में रखना है, माइंड में रखना है. First is not a complete binary tree. That's why it is not correct. Very good. Next, इसका जल्दी आंसर बता दीजिए. Consider a complete binary tree where the left and right subtrees of the root are max heaps. देखिए आप, ये एक रूट है, उसकी लेफ्ट सबट्री मैक्स हीप है, राइट सबट्री भी मैक्स हीप है, बोथ आर मैक्स हीप. द लोअर बाउंड मिनिमम ऑफ द नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू कन्वर्ट दिस ट्री टू अ हीप कितना होगा? दैट विल बी बेसिकली हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट चाइल्ड एंड एडजस्ट दिस. तो एडजस्टमेंट के लिए मैक्सिमम आपको बेसिकली टाइम लगेगा, हाइट प्रोपोर्शनल, दिस इज log n. सो देयरफॉर द आंसर इज ए. वेरी करेक्ट. उसी तरह और एक भी क्वेश्चन है, देखिए आप, ये आप सॉल्व कर सकते हो, आई नो. चलिए, ये भी टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग पे है. मैंने डिस्कस किया था टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्रैश बैच में. उसी बेसिस पर आप ये क्वेश्चन भी आप वर्क कर सकते हो. यू कैन टेल मी हाउ एवर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए, ग्राफ है, उसकी टोपोलॉजिकल ऑर्डर कौन सी है बताइए. टोपोलॉजिकल ऑर्डर, व्हाट इज द करेक्ट टोपोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ दिस ग्राफ? You can start with P or you can start with S. देखिए आप, P does not have any incoming edge, S also does not have. So that means either you can start with P or you can start with S. Right? P के बाद आप प्रोसेस करोगे S, S के बाद आप डेफिनेटली प्रोसेस करोगे P. क्योंकि आप Q और R कंप्लीट करने के लिए दोनों भी कंप्लीट करना है. फिर उसके बाद आप R करोगे PS के बाद या Q करोगे, राइट? तो PS जब कंप्लीट करोगे तो देन डेफिनेटली you can process R. You can process R. Then after R you can do Q. So SP, then after SP, then definitely you can go for R, then Q. So therefore it matches with option C. It matches with option C. इस तरीके से you can work out topological orders. Next question देख लेंगे. This is also a very simple question on heap. You can do it without any problem. This is also a simple one. And let me check. हाँ, ये एक आंसर बता दीजिए मुझे, because there is also some slight involvement. Yes, exactly correct. Srinu Kethava. What is the answer for this? Let H be a binary min heap consisting of n elements implemented as an array. What is the worst case time complexity of an optimal algorithm to find the maximum element? देखिए है, heap है min heap. Min heap में smallest element will be at the root. And you want to find the largest element. Largest element जो होगा वो leaf level पर होगा. तो how much will be the number of comparisons or what will be the time complexity of this? You will have to search among the last n by 2 element. That is one approach. Or the other approach of solving this problem is convert min heap. This is the ideal approach. Min heap to max heap using heapify method or build heap method. This will take time of order of n. That's all, you get the answer. So therefore the correct answer is order of n. Convert min heap to max heap using heapify method, right? And you get the answer directly, order of n. Chaliye. Next. This is also a simple question you can try on topological sort, or maybe you can do it as an exercise later point of time.
So from the today's session, this is what I have basically to discuss with you, right? So these are the questions which I thought. Some of them which are repetitive questions, I have left them for you to work out on your own. So please, the build hype ka time complexity is order of n. Some people are asking here. So let me write it here. Heap complexities, very important point. Some people are getting confused. First, creating a heap. Create. With insertion method, order of n log n. This is insertion method. This I discussed in my crash course. If you want, you can watch the video. Then heapify method is order of n. Heapify method. Or you also call this method as build heap. Right? Second, time complexity to insert an element, delete an element from root, or increase or decrease key. All these operations on heap will take order of log n. You remember this. This you have to remember. Right? Finding an element. हमने आज ही देखा, finding an element in a heap will take order of n. Because in the worst case, you have to search all elements. ये complexities remember कीजिए. So my advice to you is, for the subject of algorithm, what should be the ideal strategy? What should be the ideal strategy? Number one, I said, improve your mathematical background. Especially the concept of functions, summations, properties of log, okay, binomial coefficients, and then exponents, some sort of differentiation plus integration plus probability. Make sure that for analysis first part, these topics of mathematics are clear, right? So then second point, I would say, be very clear with asymptotic notations and their properties. I'm telling all important topics to be covered for algorithms. Second, design strategies. Particularly for divide and conquer. Remember our recurrences. What is the recurrence for each problem which you are going to solve, right? And then recurrence and there are complexities you try to remember of standard algorithms like 2t root n plus 1, aaj humne dekha, that is nothing but order of log n. T of root n plus 1, it is order of log n. Like that you remember recurrences. Plus master method, master theorem, plus recursion tree approach. This you try to do well for divide and conquer, then definitely it will be helpful for you. When you come to greedy method, three important topics I would suggest you to master. One is minimum cost spanning tree, Dijkstra's single source shortest path, right? And Huffman coding. Ye three problems you try to master them. Majority of the times they have been repeated in the previous exams. और ये basis पर not only numericals but also some reasoning questions. जैसे मैंने reasoning question solve किया था with regard to minimum cost spanning tree and single source shortest path spanning tree. So like that you can try to perform this. Now coming to third, dynamic programming. The problems of LCS, the problems of matrix chain product, the problems of all pair shortest path, Floyd-Warshall's algorithm, Bellman-Ford algorithm, traveling salesperson. There is another problem called sum of subsets. These are important problems from dynamic programming. Master them. Okay? And then finally, hashing definitely is also part of algorithm. वो भी आप पढ़ लीजिए, या because that may be covered in algorithm subject of data structures also, right? And then finally, last I would say, heaps.
Remember all heap operations, be comfortable with insert, delete, decrease key operations on heap, insertion and deletion, be comfortable. Solve all PYQ questions, definitely. 70% at least, I would say 60 to 70% of the questions will be based on variations of PYQ. So if you are comfortable with PYQs, then I'm very sure you can get a reasonable handsome score, if not excellent, right? अगर आप PYQ से certainly thorough रहे तो reasonable gate score आएगा, आपको अच्छा score भी आएगा, अच्छा rank भी आएगा, and that it definitely increases the probability that you can open the gate of GATE IITs. ठीक है? So that is the thing. And then motivation part, I would like to say definitely that you don't try to compare yourself with others. कि आप कितना पढ़ रहे हो, मैं कितना पढ़ रहा हूँ, आप कितना study कर रहे हो, right? Don't go into all that performance comparison. Don't go, you get demotivated. Concentrate on your own preparation. Just focus on your own preparation. Don't go into that. My name, I mean, yesterday also, I told about myself. Somebody is also asking now. I teach in PW platform. My name is Dr. Khalil Khan, right? And I teach the courses of operating systems and algorithms, right? So that is about me. And as I said yesterday, I have more than 22 years of teaching experience for GATE only. And I have been teaching in the teaching field for the past almost now 28 years, more than 28 years. That is about me. So there are some videos on the PW platform of mine on career awareness, the preparation strategy for GATE, all that is there on the PW platform. You can watch them. Particularly those who are in first year, second year, who wanted to write for GATE exam, you can watch that video, you will get all information about it. Okay? You can write. And in short, very soon I'm going to make a small video on preparation strategy for operating systems, and like that preparation strategy for algorithms also. So you can watch them, it may come up shortly in the PW platform. Okay? So this is what I have to say from my side with regard to this. Right? So again, because this was my second session on PW platform for PYQ series, I hope I did my level best to justify in the given stipulated time. Revision भी होगा आगे फिर मिलेंगे हम. वहाँ revision is also pending, so OS revision होगा complete of all that. तो वहाँ पर फिर से एक बार बात करेंगे. So be prepared for that revision courses. और फिर एक Super 23 series भी है जहाँ पर other than GATE questions हम discuss करेंगे, some important questions, expected questions वो भी discuss करेंगे. So be prepared for that. लगे रहो आप platform पर. Then you can basically be in touch and try to do your level best. So my sincere advice again, boys and girls, don't go into any kind of negativity. In the context of operating system, I would tell you, kill the process in your mind which creates negativity. Let it be only positive processes there in mind. Don't compare with others. Don't keep on thinking what is going to happen if I don't get this, if I don't get that, if I don't work out this. Just focus on your preparation. जो भी process, जो भी आप पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से वो पढ़िए, right? Don't go into unnecessary negativity and unnecessary thought. Just focus on your positive aspects, and then let the desire, let the rhythm and the momentum be active in your mind, in your heart, and then you try your level best. Less rest, you leave it to God, your fate, right? So nothing would happen, everything will happen good. Do a nice good preparation with all commitment and all hard work, right? This is what I would say for this. Thank you very much for this class. Hope you enjoyed it. Next time we will meet again for other things. Okay, take care, goodbye.